सी मारोन जगोड़ा ही जिंदड़ी बुढ़ी वई। अस्सलाम वालेकुम। तव्हां ॾिसी रहिया आहियो सिंध जी पुकार। मां तव्हांजी पंहिंजी किरण मीर। कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? ठीकु आहियो? ख़ैर ख़ैरियत सां आहियो? ऐं यकीनन मुंहिंजी आवाज़ मां तव्हांखे महसूसु थींदो हूंदो त मुंहिंजी तबियत थोरी ख़राबु आहे। थोरी न बल्कि इलाही तबियत ख़राबु आहे। ऐं कराची जो हिन टाइम जेको वेदर आहे उहो काफ़ी डस्टी ऐं डिस्टर्ब वेदर थी वियो आहे। छो त असां यको महीनो 2 महीना जंहिं वेदर मां घुमी फिरी जेको अची वेठा आहियूं, जेको बरसातूं थियूं, ॿोॾि आई, जेके बि हालात हुआ, असां उन वेदर जा ॼण आदी थी विया हुआसीं कुझु टाइम जे लाइ। वरी ही जेका गर्मी थी आहे, चिट वारी गर्मी जंहिंखे चवंदा आहियूं न असां, शदीद गर्मी, हीट वेव वारी, हिन हणी माण्हुनि जो जेको आहे न सत्यानाश करे छॾियो आहे। ऐं उन खां अलावा डेंगी, मलेरिया, टाइफाइड एतिरी हद ताईं आहे जो 92 केसिस कराची में थी विया आहिनि, 86 केसिस पंजाब में थी विया आहिनि। ऐं जेके सिलाब ज़दगान जिथे आहिनि, जेके जिथे जिथे सिलाबी सूरत हाल आहे, उते त मतिलबु मां काउंट नथी करे सघां त हो वीचारा कहिड़ियुनि मुश्किलातुनि में हींअर ज़िंदगी गुज़ारनि था। यकीन कयो, असां त वरी बि शहरनि में, तिनि वॾनि वॾनि शहरनि में वेठा आहियूं, हॉस्पिटल्स आहिनि, वञूं था, हिकदमि पंहिंजो ट्रीटमेंट कराए करे अची था वञूं, मेडिसिन खाई था वठूं पिया। हू वीचारा बेयारो मददगार वेठा आहिनि। बेशक अल्लाह जी ज़ात आहे, मायूस न थियणु घुरिजे। अल्लाह बेशक आहे, ही आज़माइश जो वक़्तु आहे, इंशाअल्लाह इहो बि ख़तमु थी वेंदो। पर ॻाल्हि इहा आहे त मेडिकल कैंप्स लाज़मी लॻायो। जेके बि असांजा भाउ भेण ॾिसी रहिया आहिनि, जेके डॉक्टर आहिनि या उन ई कंहिं इदारे सां रिलेटेड आहिनि, प्लीज़ मां तव्हांखे रिक्वेस्ट कंदमि, हिकिड़ो फीमेल स्टाफ जी ज़रूरत आहे ऐं ॿियो डॉक्टर्स जे कैंप्स जी ज़रूरत आहे उते। छो त डेंगी तमामु घणो आहे, मलेरिया तमामु घणो आहे। उन खां अलावा ॿिया जेके जीत आहिनि या इन्फेक्शन्स आहिनि, स्किन डिज़ीज़िस उते तमामु घणियूं थी रहियूं आहिनि। सो इन्हनि शयुनि जी जल्द अज़ जल्द मेडिसिन्स असांखे उते खपनि थियूं। ऐं ख़ुदा न ख़्वास्ता अगरि कंहिंखे ॾंग बि हणे थो त विदिन सेकेंड्स डेथ थी वञे। हू माण्हू कीअं हॉस्पिटल ताईं पहुचे, कीअं मेडिकल कैंप ताईं पहुचे ऐं छा कजे हिन वक़्तु? सूरत हाल तव्हांजे साम्हूं आहे, काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन आहे, ख़ासि करे उन्हनि एरियाज़ में जिथे जिथे नांगनि जा इहे वाक़िया थिया आहिनि या विछुनि जा वाक़िया थिया आहिनि या जेके ॿिया जानवर जेके आहिनि वीचारा मरी विया आहिनि। ॿी ॻाल्हि इहा त जॾहिं ॿोॾि ईंदी आहे त मच्छी जेका आहे उहा तमामु घणी थी वेंदी आहे दरिया में। ऐं हिन वक़्तु अॼु जी रीसेंट रिपोर्ट आहे मूंखे जेका ख़बर पई ऐं ताक़ीद कई वई आहे त हिन टाइम मच्छी न खाओ। उन जो रीज़न इहो आहे त दरियाउनि में ज़ाहिर आहे जेका बि ॿोॾि वारी सूरत हाल आहे, उन में जानवर मरी विया आहिनि, इंसान ॿुॾी विया आहिनि, कुझुनि जी लाशूं मिलियूं आहिनि, कुझुनि जी न मिलियूं आहिनि। सो उहो जेको हिकिड़ो जेको पाणी जेको आहे न, हींअर ज़हरीलो पाणी थी वियो आहे। ज़ाहिर आहे उन में मच्छी बि मरंदी, उन में ज़हर फैलिजी वियो आहे, बदबू तमामु घणी थी वई आहे, जीत तमामु घणा थी विया आहिनि। ऐं उन कंडीशन में जेकॾहिं तव्हां का मच्छी वठी खाओ था त तव्हांजी पंहिंजी सिहत उन में ख़राबु थी सघे थी। त मच्छी जे लाइ हींअर मना कई वई आहे त मच्छी न खाओ। पल्लो हींअर जेको असां ॾिसंदा आहियूं त पल्लो असांखे नज़र ई न ईंदो आहे। क़िस्मती को पल्लो नज़र आयो त नज़र आयो, पर हिन टाइम पल्लो बि तमामु घणो नज़र अची रहियो आहे। सो उहो बि जेकॾहिं खाओ था त उहो बि एहतियात सां खाओ, छो त उहो ज़ाहिर आहे सूरत हाल तव्हांजे साम्हूं आहे सॼी, पर हर शइ खे नज़र में रखी करे पोइ इहे शयूं खाओ। अॼु असां सां गॾु जेके ॿ गेस्ट आहिनि, माशाल्लाह सां ॿई वॾा नाला आहिनि, पंहिंजी पंहिंजी जाइ ते पंहिंजे पंहिंजे एरियाज़ में तमामु घणो कमु करे रहिया आहिनि, चाहे उहे कराची हुजे या आउट ऑफ कराची हुजे। सो मां तव्हांखे ॿुधायां थी, असां सां गॾु आहिनि इंजीनियर अब्दुल अज़ीज़, डेप्यूटी सेक्रेटरी जमात इस्लामी कराची, एक्स प्रेसिडेंट अल ख़िदमत फाउंडेशन कराची। ऐं उन खां अलावा असां सां गॾु हिते मौजूदु आहिनि मलिक अब्दुल गफ़ार सईदी, प्रेज़ेंट सिंध मैनेजिंग ट्रस्टी अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी। सो उन्हनि खे सलाम कंदासीं ऐं हिननि सां खोड़ सारी कचेरी कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, की आयो? ठीक आयो? तबीयत ठीक है? मैं आप दोनों को जो है यहाँ पर सिंध की पुकार में वेलकम करती हूँ। और सूरत हाल सर आप दोनों के सामने है और माशाल्लाह आप
اپنی اپنی جگہوں پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. سو پہلے میں آپ سے سر اسٹارٹ کرنا چاہوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو پتہ ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن اور جماعت اسلامی کبھی بھی کوئی کلیمٹی آ جائے, چاہے وہ زلزلہ ہو, چاہے وہ بارشیں ہوں, چاہے وہ کسی بھی قسم کی سیلاب معاملات ہوں, تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے دیگر کاموں کو چھوڑ کر لوگوں کی خدمت کے لیے جو ہے وہ نکل جاتے ہیں. یہی کوئی صورتحال جو ہے اس بار بھی پیش آئی, لیکن قبل اس کے کہ میں آپ کے سامنے اس کی ایک رپورٹ رکھوں, اس کے بارے میں آپ کے ساتھ کوئی ڈسکس کروں, میں جو اہم ترین بات اس وقت اپنے ویورز کو بھی آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ رب العزت کا بہت شکر ہے, بہت احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو بچا کے رکھا ہوا ہے, اور ہم جو ہے وہ اس وقت اپنے نرم بستروں پہ موجود ہیں, ہم اپنے گھر کی چھتوں کے نیچے موجود ہیں, ہمیں 3-4 وقت کا جو ہے کھانا میسر ہے, صاف پانی ہمیں میسر ہے. ابھی آپ فرما رہی تھی نا, ہمیں دوا پینے کو بھی مل جاتی ہے, ہسپتال مل جاتے ہیں. ہم خوش نصیب لوگ ہیں, لیکن ہمارے سیلاب کے اندر گھرے ہوئے جو لوگ ہیں وہ اس وقت سخت آزمائش میں ہیں, وہ بڑی آزمائش میں ہیں. ان کے بچے گھروں سے باہر ہیں, ان کی عورتیں گھروں سے باہر ہیں, ان کے گھر جو ہے ختم ہو چکے ہیں, وہ بالکل ہی جو ہے وہ اس لحاظ سے سڑکوں پہ آ گئے ہیں, بلکہ سڑکوں پہ نہیں پانی میں آ گئے ہیں. ان کی یہ کیفیت ہے. لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ آزمائش کی گھڑی صرف ان کے لیے ہے. یہ بات میں بہت اہمیت کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں, اصل میں آزمائش ہماری ہے. ان کی تو جو آزمائش ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, ہم فزیکلی وہاں جا رہے ہیں تو وہاں دیکھ رہے ہیں, تو ان کی آزمائش تمہاری آنکھوں کے سامنے. لیکن ایک وہ آزمائش ہے جو شاید کسی کو نظر نہیں آتی, وہ میری اور آپ کی آزمائش ہے کہ اس آزمائش کی گھڑی کے اندر ہم اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کی جو ہے کیا خدمت کر رہے ہیں, ہم ان کی ضروریات کو کتنا پورا کر رہے ہیں. کیا ہم اپنے کھانے میں لگے ہوئے ہیں, اپنے پہننے میں لگے ہوئے ہیں, اپنے مزے میں لگے ہوئے ہیں, یا ان کا بھی ہمیں خیال کرنا ہے. تو میرے دوستوں, بھائیوں, میری بہنوں, یہ وقت ہے آزمائش کا ہمارے لیے بھی. اس لیے اس آزمائش کی اس گھڑی میں اپنے ان بھائیوں بہنوں کو ہمیں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے. میں ایک ATN کا بہت شکر گزار ہوں, بے انتہا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, موقع کو دیکھتے ہوئے آپ نے ہمیں مدعو کیا, اور فلڈ کے ریلیف کے حوالے سے ہم سے جو ہے وہ آپ نے گفتگو کرنے چاہیے یہاں پر, جو انشاءاللہ ہم اپنی بات کے اندر رکھیں گے. دیکھیں, کوئی بھی کلیمٹی ہو جائے, کسی بھی قسم کی کلیمٹی کے اندر 3 آرز ریسکیو, ریلیف اور ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے. اس وقت ہم جو ہے وہ ریسکیو اور ریلیف کے فیز میں ہیں. ریسکیو کا یہ حال ہے کہ سوات کے اندر آپ نے دیکھا پوری ایک ہوٹل جو تھی وہ پوری کی پوری جو ہے بہہ گئی. آپ کو پتہ ہے کہ اس ہوٹل کے ساتھ جو ہے ایک مسجد تھی, اور اس مسجد کے اندر جو ہے وہ جو ہوتا ہے نا جنازہ, وہ رکھا ہوا تھا. ہمارے لوگوں نے کہا کہ اب ہم اس ہوٹل کے اور آس پاس کی بلڈنگوں سے لوگوں کو کیسے ریسکیو کریں. وہاں پر 119 اور دیگر جتنے بھی ادارے تھے, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ اس کی لوگوں کی خدمت کریں, لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الخدمت کے والنٹیئرز نے رسے باندھ کے اپنی جان کو داؤ پہ لگا کے اس کو اس میت کے جنازے کے اندر اٹھا کے جو ہے وہ لے کر آئے. اس کی ویڈیوز بھی موجود ہے, اپنی جگہ بھی موجود ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب ریسکیو کا کام آتا ہے تو اس کے بعد جو ہے پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہم کیسے کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, بلکہ یہاں تک کہ ہمارے جو سابقہ گورنمنٹ کے اندر جو MPA تھے محمد علی صاحب, وہ خود اس کے اندر لگے ہوئے تھے. وہ بعد میں پھر وہیں پہ وہ بے ہوش بھی ہو گئے. ہمارے ایک ساتھی کی وہاں پر جان بھی گئی, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے. لیکن یہ وہ کام ہے جو ہم اپنا سمجھ کے کرتے ہیں. اپنے بھائیوں, پاکستانی ہمارے بھائی ہیں, چاہے وہ سندھ کے رہنے والے ہوں, چاہے وہ KPK کے رہنے والے ہوں, چاہے وہ پنجاب کے رہنے والے ہوں, چاہے وہ بلوچستان کے رہنے والے ہوں. یہ سارے مسلمان ہیں, یہ سارے بھائی ہیں, اور اگر مسلمان نہیں بھی ہیں تو ہیں پاکستانی. جب وہ پاکستانی ہیں, انسانیت ہے, اس لحاظ سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کا خیال کریں. اس سے آگے آپ بڑھتے ہیں تو ریلیف کے کام کے اندر الحمدللہ خاصا اس میں جو ہے وہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. تو ریلیف کے کام کا ایسا ہے کہ اپنے بڑے آرگنائز, کیونکہ ہم اس کے اوپر ٹریننگ لیتے ہیں, پورا سال ہماری اس کے اوپر ٹریننگ ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ کبھی کوئی کلیمٹی آ جائے تب جا کے ریلیف کے جیکٹ پہن کے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں بازار مارکیٹ کے اندر, بلکہ ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر اپنے ورکرز کو ٹریننگ کرواتے ہیں. ہمارے پاس پنڈی کے اندر ایک باقاعدہ ٹریننگ مرکز ہے,
اس مرکز کے اندر ہمارے کارکنان کی یکی بعد دیگرے ان کی ڈیوٹی لگتی ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ خدا خاصا آگ لگ جائے تب آپ نے کیا کرنا ہے, اگر زلزلہ آ جائے تب آپ نے کیا کرنا ہے, سیلاب آ جائے تب آپ نے کیا کرنا ہے. تو یہ جو آپ کو اتنی بڑی ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے یہ ایک دم ایک دن میں نہیں ہو گئی, ایک تجربہ ہے جس تجربے سے ہم لوگ گزرے ہیں. 2005 کے زلزلے سے ہم گزرے ہیں, 2010 کے سیلاب سے ہم گزرے ہیں, 2011 کی جو ہے وہ طوفانی بارشوں سے ہم گزرے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے لوگ اس معاملے میں ٹرین ہیں. ماشاءاللہ. اچھا, اس ٹریننگ کا فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں وہ جو سسٹم ہوتا ہے نا کہ ہاؤ ٹو مینیج آل دیز تھنگس. کراچی کے اندر ہم نے یہاں پر 130 کیمپس لگائے پورے شہر کے اندر. صحیح. ان 130 کیمپ کے اوپر لوگ جو ہیں وہ سامان بھی دے رہے ہیں, لوگ جو ہیں اجناس بھی دے رہے ہیں, لوگ جو ہیں دوائیں بھی دے رہے ہیں, لوگ جو ہیں پیسے بھی دے رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کوئی 6 بلین روپیز, آئی ریپیٹ 6 بلین روپیز پورے پاکستان کے اندر الحمدللہ اب تک الخدمت نے جمع کیے ہیں. اور 1 بلین جس میں سے کراچی کا کنٹریبیوشن ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں اس کراچی کی بات کر رہا ہوں جو کراچی اس وقت خود اس بارش کی مشکلات سے گزرا ہے, جو کراچی شہر کی ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر ہمارا رہنے والا, کراچی کا رہنے والا پریشان پچھلے دنوں رہا ہے, جس کو بجلی کے بل بھی پریشان کر رہے ہیں, جس کو جو ہے وہ کیا کیا مسائل, پانی کے مسائل ہیں, پانی کی بوند بوند کو لوگ یہاں ترستے ہیں. لیکن اس کراچی کا یہ حال ہے, اس شہر کراچی کا یہ حال ہے کہ ایسی کسی کلیمٹی کے موقع پہ دل کھول کے احتیاط دے. بے شک یہ حقیقت بات ہے. یہاں واقعی ان میں کو شک کونے کراچی جا مانو اللہ سائیں سبھنن کے پنجے حفظ و مان میں رکھے, जेके भी असांजा भाउ भेण आहिनि जितां भी जहिड़े जहिड़े शहर मां बि कॉन्ट्रीब्यूट कनि था, पंहिंजो हिसो विझनि था. तव्हां सभिनीनि खे हिकिड़ो त सलाम हुजे ऐं अलाह साईं अञा बि वधीक तव्हांखे ॾिए जो तव्हां अहिड़नि माण्हुनि जी अञा बि मदद कयो ऐं दिलि खोले मदद कयो. ॻाल्हि इहा आहे त शायदि थोरो घटि पर तॾहिं बि कराची पोइ ते न आहे रहियो. जीअं मां तव्हांखे हमेशह हिकिड़ी शइ चवंदी रहंदी आहियां त चाहे उहो 2005 वारो ज़लज़लो हुजे, 2010 वारी ॿोॾि हुजे या 2020 वारी बरसातूं हुजनि, कराची दिलि खोले डोनेट कंदो आहे. हिन दफ़े वरी कराची साबित कयो आहे अल्हम्दुलिल्लाह, हिन में को शक कोन्हे को त असांजा पंहिंजा जेके इहे कराची जा रहाइशी जेके बि असांजा भाउ भेण आहिनि कॉन्ट्रीब्यूट कनि था. ज़ाहिर आहे हर कंहिंजा पंहिंजे हिसाब सां हालात हूंदा आहिनि, कॾहिं अप्स एंड डाउन्स बि लाइफ में अची वेंदा आहिनि, पर तॾहिं बि उहे शायदि पंहिंजा एक्सपेंसिस थोरा घटि करे माण्हुनि जी मदद जे लाइ निकिरनि था. सर तव्हां छा चवणु चाहींदव? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सभिनी खां पहिरीं त मां KTN जो शुक्रगुज़ार आहियां जी जो फ्लड रिलीफ जे इन मौक़े ते असांजी NGO खे यादि कयो, असां शुक्रिया अदा कयूं था. उन खां पोइ मां तव्हांखे थोरो पंहिंजे अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी जो तारुफ़ कराईंदुसि. जी. अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी अल्हम्दुलिल्लाह कराची ऐं पूरे पाकिस्तान में असांजा ऑफिसर मौजूदु आहिनि. आज़ाद कश्मीर मुज़फ़राबाद में ऑफिस मौजूदु आहे. ऐं 1983 में कराची में असांजो चेयरमैन हाजी मोहम्मद हनीफ़ तैयब जेको वॾो मज़हबी स्कॉलर बि आहे, पुठी दफ़ा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सदारती अवार्ड बि ॾिनो असांखे. साईं वफ़ाक़ी वज़ीर पेट्रोलियम ऐं 4-5 ॿियूं वज़ारतनि में बि रहियो ऐं नेक नामी सां पंहिंजो पीरियड गुज़ारियो अल्हम्दुलिल्लाह. 1983 में कराची में अल मुस्तफ़ा सोसाइटी जी बुनियादु विझी पूरे पाकिस्तान में नेटवर्किंग जो विछायो. कराची में असांजा 5 हॉस्पिटल मौजूदु आहिनि जेके पूरे कराची 4 डिस्ट्रिक्ट में मौजूदु आहिनि. हिकिड़ो गुलशन इक़बाल जो हेड ऑफिस आहे, औरंगी टाउन कस्बा मोड़ ते आहे, शाह फैसल कॉलोनी में आहे, मलीर खोखरा पार में आहे, ॿियो कुरंगी में आहे. उन्हनि हॉस्पिटल में तमामु फैसिलिटियूं जेके हॉस्पिटल में मौजूदु हूंदियूं आहिनि, डायग्नोस्टिक, एडमिशन, ऑपरेशन, कंसल्टेंट ऐं डायग्नोस्टिक जेके तमामु बहितरीनु फैसिलिटियूं अल्हम्दुलिल्लाह, उहे असां माइनर चार्जिस में उन कंदा आहियूं. अच्छा. उनजो फ़ाइदो इहो आहे जेको सफ़ेद पोश माण्हू उहो वॾनि इस्पताल में वञी कोन थो सघे त उहो थोरनि पैसनि में अची पंहिंजो बाइज़त तरीक़े सां पंहिंजो इलाजु कराए. ऐं असांजो वेलफेयर डिपार्टमेंट आहे जेको अफोर्ड नथो करे सघे उहो अचे ॿुधाए थो, उन खां जेतिरो ॾेई सघे थो उन खां वठूं था. जीअं फ्री जो आहे न पैसनि त फ्री में इलाजु कयूं था. इहो असांजी इस्पताल ईअं थी वियो. ॿियो असांजो यतीम खानो कराची में मौजूदु आहे. कुरंगी में अल्हम्दुलिल्लाह 200 ॿार उन में रहनि पिया. उन्हनि तमामु रहणु खाइणु पीअणु इंग्लिश मीडियम स्कूल असांजो ठहियलु आहे ऐं बहितरीनु उनजी तरबियत जो इंतज़ाम कयल आहे. मज़हबी तालीम असां उनखे ॾियूं पिया. उहो इंग्लिश पढ़ण सां गॾोगॾु कंप्यूटर ऐं टेक्निकल शयूं ऐं ॿियूं जेके मज़हबी शयूं हूंदियूं आहिनि उहे यतीम ॿार आहिनि, उनजे मथां ॿियो को न आहे त असांजी अख़लाक़ी तरबियत जो बि इंतज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह कयल आहे. ईअं असांजा 2 शेल्टर होम आहिनि बुज़ुर्गनि जा ऐं मायुनि जा धारदार आहिनि.
उन में असांजा बुज़ुर्ग बि आहिनि ऐं मायूं बि आहिनि ऐं असांजी ख़िदमत लाइ उनजो स्टाफ उन हिसाब सां रखियलु आहे। उनखे दवायूं उन जेके ज़रूरतूं आहिनि कपिड़ा आहिनि मानी जंहिं हिसाब सां उनखे ज़रूरत आहे उहा अल्हम्दुलिल्लाह अल मुस्तफ़ा सोसाइटी उन कई पई। माशाअल्लाह। इहो पूरे पाकिस्तान में असां अल्हम्दुलिल्लाह ख़िदमतूं आहिनि। हाणे जीअं तव्हां फ्लड जे हवाले सां प्रोग्राम तव्हांजे फ्लड जे हवाले सां आहे, सभिनी खां पहिरीं इहो सिलसिलो शुरू थियो बारिशनि जो बलूचिस्तान मां। अल्हम्दुलिल्लाह अल मुस्तफ़ा सोसाइटी हितां पंहिंजी टीमूं मोकिलियूं, हुते जेके असांजा मक़ामी माण्हू विंदर उथल ऐं बेला में असांजी सेंटर बि हिकिड़ो ठहियलु आहे, मस्जिद बि ठहियलु आहे, मदरसो ठहियलु आहे। हुन में हुननि जी माण्हुनि जी मार्फत असां राब्तो कयोसीं, असांजी टीमूं हुतां वियूं। ओॾीमहिल तव्हांखे ख़बर आहे त उथल खां अॻिते जायूं कोन हुयूं वञण जूं। असां पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान रेंजर असां हुन जा शुक्रगुज़ार आहियूं जो हुननि असांखे घणियूं सहूलियतूं मुयसरु कयूं। मतिलबु असां पंहिंजो किचन ठाहियोसीं उथल में, उते मानी पचाए पोइ नेवी जा जेके माण्हू हूंदा उहे हेलीकॉप्टर जे ज़रिए मुख़्तलिफ़ ज़रियनि में उते माण्हुनि खे मानी पचाए मोकिलींदा, छो त उन्हनि खे राशन ॾियण जो फ़ाइदो कोन हो, त उन्हनि को शयूं कोन जो कीअं पचाइनि उते। अल्हम्दुलिल्लाह इहे 3 हफ़्ता असांजो उते ऑपरेशन हलियो पूरे पाकिस्तान पूरे बलूचिस्तान में। पोइ जॾहिं उते कुझु हालात सुठा थिया, पूरी सिंध में वरी वॾी बारिशूं थियूं, तबाही थियूं, पोइ असांजे सभु पूरी टीम पूरे सिंध में लॻी वियूं। जीअं साईं ॿुधायो त इन्हनि जो साईं जो इंफ्रास्ट्रक्चर जी ॻाल्हि कई, असांजा बि पूरे सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह हर शहर में कारकुनान मौजूदु आहिनि, असांजी टीमूं मौजूदु आहिनि। असांखे उते हितां रुगो गाइड कयूं था उन्हनि खे, हिते सामान जेको उनखे खपे थो उहो असांखे ॿुधाइनि था, उन हिसाब सां असां उनखे डील कयूं पिया, हिते माण्हू मोकिलियूं पिया, टीमूं मोकिलनि पियूं। ऐं हीअ सॼे सिंध में पोइ तव्हां अॻिते तव्हांखे ॿुधाईंदासूं कहिड़े कहिड़े शहर में असां कहिड़ी कहिड़ी शइ कयूं पियासीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ज़बरदस्त, सुठी ॻाल्हि आहे। ऐं तव्हां ॿिन्ही खे जेको अल्लाह सां इन जो अजर इंशाअल्लाह ॾींदो, ॾाढो सुठो कमु करे रहिया आहियो ॿई पंहिंजी पंहिंजी जाइनि ते। इन ई तरह सां व्यूअर्स मां तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदसि त KTN जी तरफ़ां जेको रिलीफ कैंप आहे त तव्हां प्लीज़ उनखे विज़िट कयो। DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन में असांजी ऑफिस आहे, उनजे बिल्कुलु हेठि ई असांजो KTN जो रिलीफ कैंप आहे, त तव्हां उनखे विज़िट बि करे सघो था। ऐं कुझु बि तव्हां डोनेट करणु चाहियो था तव्हां प्लीज़ करे सघो था डोनेट, चाहे उहो राशन हुजे, चाहे कपिड़ा हुजनि, चपलूं हुजनि, या ॿारनि जा रांदीका हुजनि, मेडिसिन्स हुजनि ॿारनि जे लाइ, जीअं बुख़ार जी मेडिसिन्स हूंदियूं आहिनि, या खंघि जी दवा हूंदी आहे, इन टाइप जी दवाऊं आहिनि, या त वरी जेको आहे ॿियूं इलाही शयूं थियनि थियूं, पाणी थी वियो, जेको बि तव्हां डोनेट करणु चाहियो था त प्लीज़ तव्हां कयो। हाँ, स्टार्ट में असां चऊं पिया त बिस्किट्स ॾियो, ड्राई शयूं ॾियो, पर हाणे जेको आहे तव्हां जेकॾहिं पैक्ड कराए राशन ॾियो त उहो वधीक सुठो आहे, छो जो उहो जेको टाइम हुयो उन टाइम उनखे इमीडिएट उन्हनि खे ज़रूरत हुई खाधे पीते जी, जेको उन्हनि खे असां फ़रहाम कयो। पर हाणे छो त इलाही ॾींहं जीअं गुज़रंदा था वञनि पिया त हुननि खे बाक़ाइदा मानी जी ज़रूरत आहे। ऐं कुझु अहिड़ियूं फैसिलिटीज़ उन्हनि वटि अची वियूं आहिनि जो नंढड़ा नंढड़ा चूल्हा बि जेकॾहिं हुननि खे प्रोवाइड कंहिं न कंहिं फाउंडेशन कया आहिनि या काठियूं हुननि जमा कयूं आहिनि त उहो पंहिंजी मानी वग़ैरह पचाइणु शुरू करे छॾियो आहे। त बहितर आहे त 15 ॾींहंनि जो महीने जो जेको बि राशन आहे तव्हां उहो पैक कराए असांजे रिलीफ कैंप ते जमा कराए सघो था। असांजी डेली बेसिस ते गाॾियूं निकिरंदियूं आहिनि, इंशाअल्लाह तव्हांजी तरफ़ां जेको आहे उहो सामान उन्हनि ताईं पहुचायो वेंदो। सर, ये एक बड़ा मसला है अब कि कुछ टाइम बाद अब सर्दियाँ आने वाली है, ये एक बड़ा मसला है। अभी भी रात में ठंड तो होती होगी क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी है। अब क्या लगता है आपको कि अब क्या आजमाइश आने वाली है? और देखिए, जहाँ तक आप आजमाइशों की बात करती हैं, आजमाइश तो खैर यही बहुत बड़ी है कि लोग इस वक्त जो है पानी में घिरे में, और आजमाइश तो ये भी बहुत बड़ी है कि हम जो है वो हेलीकॉप्टर के लिए दरख्वास्त करते रहे। सराजुल हक साहब हमारे अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान, वो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से लेके, चीफ मिनिस्टर से लेके, चीफ सेक्रेटरी से लेके नीचे तमाम इदारों को फ़ोन किया कि वो 5 लड़के जी मोहम्मद यूसुफ, आज़ाद और ये वहाँ खड़े हुए हैं टीले पे, और 5 घंटे हमारे पास मौजूद हैं। अगर आप कोई हेलीकॉप्टर भेज देंगे तो इन 5 लोगों की रेस्क्यू हो जाएगी। उन्होंने कहा अगर आप जो है कोई मुश्किल आपको होती है, हमारे पास जो है हेलीकॉप्टर तो नहीं है, हमारे पास जो है जहाज़ तो नहीं है, हम उसके फ्यूल के पैसे देने को तैयार हैं जमात इस्लामी वल खिदमत, लेकिन आप मेहरबानी कर लें, जो हेलीकॉप्टर आपके नाश्ते के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो हेलीकॉप्टर आपको जिसको रिक्शे के तौर पर आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बराए मेहरबानी इनको रेस्क्यू कर लें। लेकिन ये हालत हमारे अपने हुक्मरानों की है कि वो उसको रेस्क्यू करने के लिए कोई नहीं आ रहा। मैं तो इस वक्त जिस तरीके से लोग घिरे हुए हैं, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि खून के आंसू दिल रोता है कि क्या हालात हैं। आप कह रही हैं कि जिन हालात के अंदर ये मामला चल रहे हैं,
ठीक है, लोग राशन बहुत अच्छा दे रहे हैं, छोटे बच्चे अपने गुल्लक भी उठा के दे रहे हैं, पॉलिश करने वाला बच्चा भी जो है वो आधी कमाई जो है वो अपने आपके डब्बे में डाल के जाता है। यानी कि ये इखलास आपको जो है वो शहरियों के अंदर मिलेगा, ये इखलास, ये मोहब्बत, ये अपने लोगों के लिए खिदमत, इसका जज्बा आपको जो है वो कराची के ऊपर पूरे मुल्क के इंसान जो हमारे रिहायशी उनके दिलों में मिलेगा। काश हमारे हुक्मरान भी जो है वो इस बात को समझने की कोशिश करें। सही बात है। दूसरी बात ये कि आप फरमा रही हैं ये जो आगे वाटर बॉर्न डिजीज़ है जिसका भी आप कुछ देर पहले जिक्र भी कर रही थी, ये सबसे बड़ा जो है ना थ्रेट है। आपको इस पानी के अंदर सांप भी मौजूद है, इस पानी के अंदर दीगर चीज़ें भी मौजूद है। इस पानी को पीने से जो नुकसान है, यानी यही बात है, जब आपके पास खाने को नहीं, पानी को नहीं, वही पानी पड़ा है, लोग पी लेते हैं, यानी कि विद इन 15 डेज उनकी जो है ना वो हालत ख़राब हो सकती है, गैस्ट्रो की मसाइल आ सकते हैं। तो मैं अपनी मेडिकल टीम को, हमारी मेडिकल टीम तो बाकायदा पीमा के नाम से काम करती है और रेगुलर तकरीबन जो है वो हमने कोई 5000 से ज़ायद मेडिकल कैंप्स लगाए हुए हैं इस पूरे इलाके के अंदर, जहां हमारे मेल डॉक्टर्स भी हैं और फीमेल डॉक्टर्स भी हैं। मैं उनको सलाम पेश करता हूं कि इन हालात में भी जो है ना वो मेरी बहनें वहाँ पे निकली हुई हैं, माशाअल्लाह। और ख़ास तौर पे जो इश्यूज़ हैं वो गायनी की भी इश्यूज़ हैं, वहाँ पर बच्चों की स्किन की इश्यूज़ हैं। 10 मेरा ख्याल है फीमेल्स का पता चला था जिनकी वो डिलीवरी होने वाली थी। जी। और बल्कि एक तो केस ऐसा भी हुआ कि डिलीवर करके वो तो पानी के बहाव पे चली गई, पानी के अंदर है, और वो बच्चा बिल्कुल। सर इन बातों को कंटिन्यू करते हैं, अल्लाह से मग़फ़िरत करे उन्हनि जी बि, ऐं जेको आहे वक़्तु ॾुखियो आहे, ऐं अचो त मदद कयूं पंहिंजनि मारवाड़नि जूं। वक़्तु आहे ब्रेक जो, जल्दी वापसि था अचूं। सी मारो न जगोड़ा ही जिंदड़ी बुढ़ी वई। सी मारो न जगोड़ा ही जिंदड़ी बुढ़ी वई। ॿीहर भलीकार था चऊं तव्हांखे सिंध जी पुकार में, ऐं शोबी भाई भी असांखे ज्वाइन करे वरितो आहे। शोबी भाई के भी सलाम कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम शोबी भाई, कैसे हैं? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम किरण, बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। लेट हो गए आज आप? लेट, हाँ जी, आज क्या रोज़ाना ही लेट है। नहीं, यकीनन काम में बिजी होंगे आप, ऐसा हो नहीं सकता। तो और बताएं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। और आप बताएं कहाँ क्या काम कर रहे हैं अभी फ्लड के हवाले से? आप भी सोशल बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो हम लोग पसे पर्दा काम कर रहे हैं, उनके मैं नाम लेना ज़रूर चाहूँगा। उसमें नवीद सोनू हैं, इमरान जावेद हैं, और मज़ीद बहुत सारे लोग हैं, सलाउद्दीन तूफ़ानी हैं, मैं ख़ुद हूँ। एक एसोसिएट है पूरी जो जिसे कहते हैं पसे पर्दा काम करना, तो वो कर रहे हैं जैसे जैसे हो सकता है, हमसे जैसे बिल्कुल माशाल्लाह। और सबसे अच्छी बात शोबी भाई ये है कि इस वक्त जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, वो एक उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है और सब काम कर रहे हैं अपने अपने टाइम, मतलब जगह पर। गुज़िश्ता सालों से ये तो डिज़ास्टर अब हुआ है, ये फ्लड अब आया है। इससे पहले जब कोविड का दौर आया था उसी दौरान ही एक बड़े आर्टिस्टों की और एक नॉन आर्टिस्टों की एक एसोसिएट बन गई थी, जिन्होंने एक हमारे जैसे छोटे लोगों के लिए एक जिसे कहते हैं एनजीओ टाइप का एक सिलसिला शुरू कर लिया था, जो कि अब हम थोड़े से स्टैब्लिश हो गए, तो हमने ज्वाइन कर लिया है वो, माशाल्लाह। तो सोशल वर्क में जिसे कहते हैं ना खिदमत खल्क में वाकई बहुत सुकून मिलता है। बेशक हकीकत बात है ये। सर जीअं त तव्हां ॿुधायो पिया पहिरियां त तव्हां किथे किथे कमु कयो आहे, त मां चाहींदसि त तव्हां ॿुधायो तव्हां कहिड़े कहिड़े डिवीज़न में कहिड़ो कहिड़ो कमु कयो आहे? जी, मां तव्हांखे पहिरीं वक़्फ़ा पहिरीं ॿुधायो बलूचिस्तान जा नाला कुझु शहरनि जा ॿुधायासीं। मतिलबु बलूचिस्तान में पहिरीं बेलॻ अॻिते न वञी सघियासीं। हाणे असांजा कुझु माण्हू जैकाबाद जेके रस्ते में ओस्ता मोहम्मद ऐं ॿिया जेके शहर आहिनि उन खे कवर कनि पिया। अच्छा। ऐं ॿियो सिंध में, पूरे सिंध में तक़रीबन अल्हम्दुलिल्लाह असांजा वर्कर मौजूदु आहिनि, टीमूं मौजूदु आहिनि। पूरो सिंध हींअर मुतासिर आहे, किथे घणो आहे किथे घटि आहे, पर को डिस्ट्रिक्ट को शहर अहिड़ो बचियलु न आहे जिते माण्हू इफेक्टेड न आहिनि। असां तव्हांखे ॿुधायूं त ठठे
ऐं सुजावल खां असां कमु शुरू कयोसीं। सुजावल शाह बंदर उते वञणु ॾुखियो, पोइ असांजी नेवी असांजी ताउन कई, उन जा ट्रक असां वटि अची विया, उहो राशन पाण सां गॾु पंहिंजी सिक्योरिटी में खणी विया। ऐं पोइ उन खां पोइ असां मीरपुर ख़ासि वियासीं। मीरपुर ख़ासि जी पसगरदाई में बि वॾो नुक़सानु थियो आहे। डिगरी रोड आहे, खिपरो रोड आहे, ॿियो उमरकोट रोड आहे, हिननि सभिनीनि ते माण्हू रोडनि ते वेठा आहिनि, जुगियूं ठाहे वेठा आहिनि। पोइ असांजी टीमूं उते अञा ताईं रोज़ाना जी बुनियाद ते मानी पचाए हुनखे ॾियनि पिया। मानी खां हाणे मानी जो टाइम हाणे तक़रीबन पूरो थियणु आहे, माण्हू वञण जी हाणे तयारियुनि में आहिनि। पोइ असां हुनखे राशन बि ॾियूं पिया। ऐं वॾो मसइलो हाणे माण्हुनि थी वियो आहे, मच्छर घणा थी विया आहिनि, तमामु घणा। मच्छरनि लाइ असां हितां कराची मां लोशन वठी वियासीं, लोशन ॾियूं पिया। लोशन में बि हाणे थोरो बचति थिए थी, पर हुन में केतिरो लोशन ॾींदा, केतिरो हाणे माण्हू हणंदा। असां हाणे जीअं साईं ॿुधायो त हाणे गवर्नमेंट खे खपे त कोई अहिड़ो स्प्रे कराए जो फ़ज़ाई हेलीकॉप्टर जे ज़रिया, जहाज़ जे ज़रिए, ताकी मच्छरनि जी बीमारियुनि खां माण्हू बचनि। मच्छर जी वॾी बीमारी थी वई हाणे, तव्हां पाण कराची में ॾिसो, हे डेंगी हाणे इस्पताल भरिजी विया आहिनि हिते। असांजा पंहिंजा अलमुस्तफ़ा जा हॉस्पिटल जेके बि आहिनि, डेंगी सां भरिया पियल आहिनि, माण्हू मोटायूं पिया, जाइ न आहे रखण जी। त गवर्नमेंट खे खपे कराची में ॿियनि हंधि जिते सैलाब आहे, जिते पाणी बीठो आहे, उते स्प्रे कराइनि ऐं इन बीमारी खां माण्हुनि खे बचाइनि। ईअं असां मीरपुर ख़ासि खां वरी सांगड़ जा कुझु इलाइक़ा अहिड़ा चक अहिड़ा आहिनि जो पुठियां बारिश खां पोइ वरी पाणी जेको वधियो आहे, 25-30 किलोमीटर उते पाणी रुॻो थी वियो आहे हिकदमि। माण्हू रोडनि सां वञी कोन था सघनि। नेवी वारनि पंहिंजी बोटूं रखियूं आहिनि, साईं वारनि जा माण्हू कमु कनि पिया, असां ॾिठो आहे अल ख़िदमत वारा, अलमुस्तफ़ा सोसाइटी जा माण्हू बि उते कमु कनि पिया, मानी पचाए ॾियनि पिया। ऐं मेडिकल टीमूं बि वञनि पियूं। हाणे बीमारियूं बि घणियूं वञनि पियूं, हिकिड़ो त मलेरिया, टाइफाइड आहे, स्किन जूं बीमारियूं आहिनि। ॿारनि हाणे केतिरा एतिरा जो पाणी उते साफ़ु मिले कोन थो। जेको पाणी बीठल आहे उहो माण्हू पीअनि पिया, मजबूर आहिनि। उहो पाणी जॾहिं पीअंदा उहो ज़हरीलो पाणी आहे, उन मां पेट जूं बीमारियूं थियनि पियूं। ऐं ख़ासि करे नंढा ॿार जेके उन एफेक्ट थियनि पिया। असांजी टीमूं ख़ासि तौर ते हाणे स्किन जूं, पेट जी बीमारियूं आहिनि, ऐं मलेरिया आहे, ऐं बुख़ार जी इन ते तवजो ॾियनि पिया। ऐं ॿियो माइन जे ख़ासि तरह जेको साईं हाणे ॿुधायो, उनजी वॾी असांजी साईं वारनि जा ॿिया जेके एन जी ओ कमु कनि पिया, गाइनी जूं वॾियूं प्रॉब्लम आहिनि। उते फैसिलिटियूं न आहिनि, माण्हू उते ट्रेवल कोन था करे सघनि वॾनि शहरनि में। पोइ असांजी अलमुस्तफ़ा जी टीमूं बि उते वियल आहिनि, एम्बुलेंसूं वियल आहिनि, असांजा कुझु माण्हू हिते वियल आहिनि। ॿियो उते असां हर शहर में उते असांजा मक़ाबी माण्हुनि पंहिंजे डॉक्टरनि सां राब्तो कयो आहे, उहो पंहिंजूं ख़िदमतूं ॾियनि पिया, पैरामेडिकल स्टाफ उतां ॾियनि पिया। अल्हम्दुलिल्लाह इहे पूरो नवाबशाह असांजो तक़रीबन महीनो थी वियो आहे ही खाधो जेको ॾियनि पिया। ऐं असांजी टीमूं जेके नवाबशाह में, मोरो में, कंडियारो में दौड़ बांदी, ऐं जेके पसमानगढ़ जिते बि हूंदियूं उते बि असांजा कमु कनि पिया। उन खां पोइ ख़ैरपुर आहे, ख़ैरपुर जा पीर जो ॻोठ आहे, ॿिया जेके आहिनि राणीपुर आहे, गंबट आहे, उते असांजूं टीमूं हींअर बि कमु कनि पियूं। सखर जे पसगरदाई में। पोइ असांजो जैकोबाद आहे, कंदकोट आहे, कशमोर आहे, उबाड़ो आहे, ऐं डेरकी आहे, घोटकी आहे, उमड़ आहे, सरहद हिकिड़ो नंढो शहर आहे, उते असांजो जेको मानी जो बि इंतज़ाम कयूं पिया, राशन माण्हू खे ॾियनि पिया, टेंट बि ॾियूं पिया उते, ऐं मच्छरदानियूं बि ॾियूं पिया। हाणे छो त मार्केट में घटि आई आहे, हाणे मच्छरदानियूं बि ठहियल कोन पियूं मिलनि। ऐं ॿियो असांजे माण्हुनि खे खपे त हाणे जेके शयूं जेके टेंट आहिनि, जेको 5000-4000 में टेंट मिलंदो, 15000-20000 ताईं पहुची वियो आहे। अञा मथे 35,000-30,000। हीअ अलाह जो ख़ौफ़ करणु खपे त इन टाइम इहो कमाइण जो टाइम न आहे। अलाह जो ख़ौफ़ दिलि में रखी त नो प्रॉफिट लॉस ते हिनखे कमु करणु खपे। हाणे ॾिसो हींअर असां 2 साल पहिरीं जेको गुज़रिया आहियूं कोविड में, माण्हू हुननि में बि ख़ौफ़ कोन कयो। वरी हीअ अज़ाब अलाह जी तरफ़ां असांखे अलार्म आहिनि। अलाह जी बारगाह में तौबा कयूं, सुठा कमु कयूं, नेक कमु कयूं, ऐं माण्हुनि जी मदद कयूं। बिल्कुलु सही। हाणे मार्केट में बि जेके शयूं वठनि पिया, राशन वठनि पिया, उन्हनि खे बि असां गुज़ारिश कयूं तव्हांजे चैनल थ्रू त उन्हनि खे सुठियूं शयूं ॾियनि, भली शयूं ॾियनि। इहे हिते पैक कराए जेके माण्हू वठी था वञनि, जेके वञनि पियूं, उहे शयूं खाइण जहिड़ियूं न हूंदियूं त छा कंदा मतिलबु। हाणे जेको माण्हू पैसा ॾिए पियो, उनजा पैसा वञनि पिया, उहे शयूं सुठियूं कोन थियूं मिलनि। इन खे हाणे माण्हुनि खे असां अपील कंदासूं, तव्हां ख़ुदा जो ख़ौफ़ कयो, अलाह जे ख़ौफ़ खां डिॼो। त हीअ ॾिसो, हीअ माण्हू जेके एफेक्टेड आहिनि उहे बि असांजा ॿाहिरि आहिनि। कल्ह उहे बहितरीनु मकाननि में रहनि पिया, बहितरीनु फैसिलिटियूं उन्हनि खे हुयूं, पर अॼु हाणे जेके ज़मीनदार माण्हू, पैसे वारा माण्हू सभु रोड ते बीठा आहिनि। उहे को भिकारी कोन्हनि, को ग़रीब कोन्हनि, पैसे वारा आहिनि, पर अलाह जे अज़ाब खां अलाह पाला उनखे महफ़ूज़ रखे, दुआ गो आहियूं। पोइ ईअं असां कंदकोट, कशमोर, जैकोबाद, ऐं हिन खां पोइ लाड़काना बि असांजी हिकिड़ी मेडिकल टीम वियल आहे, उहो कंबर, शहदादकोट, लाड़काना, इहो सॼो इलाइक़ो कवर कनि पियूं। ऐं वरी सभु वॾो नुक़सानु जेको थियो आहे दादू में जेको फ्लड आयो आहे, ख़ैरपुर, नातिन शाह,
जोही मेहड़ ये सभु बुॾा पिया आहिनि उते बि असांजी टीमूं वियल आहिनि असां कोशिशि करे राशन बि मोकिलायूं पिया ऐं असां पंहिंजी तव्हांजे हिन चैनल जे मार्फत उन्हनि सां अपील कंदासीं इंतिज़ामिया सां हाणे जेके असांजी रेस्क्यू टीमूं वञनि पियूं ऐं जेके ट्रक असांजे राशन वञनि पिया उनखे सिक्योरिटी फ्राहम कनि हाणे असांजी टीमूं जेका शइ उते किथे खपे जेसि ताईं माण्हू कोन पहुता आहिनि असांजी कोशिशि आहे त उते जेके बराड़ियुनि में वेठा आहिनि माण्हुनि बंधनि ते वेठा आहिनि रोड ते शहर में वेठा आहिनि हर कोई ॾिए पियो उनखे पर असांजा मक़ामी माण्हू जेके ॿुधाइनि पिया त फला जाइ ते अञा इमदाद कोन पहुती आहे हाणे असां जो सामान हुते लाइ मोकिलियूं पियूं उहे शयूं हुते कोन थियूं पहुचनि माण्हू रस्ते में फुर पिया कनि इन खे इंतिज़ामिया खे खपे त जेके अचनि पियूं टीमूं उनखे पुलिस सिक्योरिटी प्रोवाइड करे रेंजर्स प्रोवाइड करे असां इन इदारनि जा बि शुक्रगुज़ार आहियूं जो असां सां वॾो वॾे ताउन कयो आहे पाकिस्तान आर्मी बि ताउन कयो आहे नेवी बि ताउन कयो आहे रेंजर्स बि करे पई पर अञा वॾियूं शिकायतूं अचनि पियूं त माण्हू फुर में लॻा पिया आहिनि सर इहो ई सवाल मां तव्हांखां हाणे करणु चाहींदमि त जेको फुर कनि था उहे इफेक्टीव त न हूंदा मुंहिंजे ख़्याल सां छो त ॾिसो उन्हनि खे त इहो ई आहे न त भई ॿियो कुझु न खपे मानी ॾियो उहे जेके वॾा शहर आहिनि ख़बर आहे त हिते माण्हू जे इंट्रेंस सां उते वेठा आहिनि उहे ही कुझु मुंहिंजे ख़्याल सां कुझु शरपसंद माण्हू हूंदा जेके इफेक्टीव जे विच में वेही करे इहे हरकतूं कनि असांजी इंतिज़ामिया जी ज़िमेदारी आहे उहे हर डिस्ट्रिक्ट में इहे जायूं ॾिसनि जिते वाक़िया थियनि पिया उनखे नोटिस वठनि पंहिंजी सिक्योरिटी उते बीहारनि ऐं जेके ट्रक माण्हू खणी पिया अचनि NGO या पंहिंजी ज़ाती माण्हू खणी पिया वञनि उन्हनि खे सिक्योरिटी फ्राहम कनि ऐं ॿियो वॾो मसइलो हाणे ट्रैफ़िक जो बि थी वियो आहे नौशहरो कंडियारो रोड बदिलो पियो आहे हाणे असांजी सुबुह टीम निकिती आहे तव्हां ट्रक काए उहो सुबुह फजर बि निकिता आहिनि हाणे 2 बजे पहुता आहिनि काज़ी अहमद 2 कलाक 3 कलाक बीठा आहिनि 2-3 हज़ार ट्रकनि जी लाइन लॻी पई आहे हू वरी मोटी पिया अचनि हाणे मतिलबु हुनखे जाइ कोन पई मिले त गवर्नमेंट खे खपे त इंतज़ाम कनि ट्रैफ़िक जो बि इंतज़ाम कनि जे हिकिड़ी गाॾी किरे थी त किरेनूं हुजनि त उनखे रस्तो क्लियर करे ऐं ॿियो माण्हू जेके जल्दी कनि था हिक ॿिए जे अॻु साम्हूं अचनि था गाॾियूं अचनि थियूं पुठियां रस्तो ई कोन थो मिले इहो बि गवर्नमेंट ज़िम्मेदारी आहे इन में माण्हू हज़ारनि माण्हू परेशान लॻा पिया असांखे वञणु ॾियो असां मतिलबु आम्हूं साम्हूं बीह था रहनि ज़ाहिर रोड्स ब्लॉक करे छॾनि था जी इहो गवर्नमेंट ज़िम्मेदारी आहे इन ते तवजो वठनि असां IG सिंध खे बि अपील कंदासूं त सिक्योरिटी जेका मामलात आहिनि जेके फुर जे कनि पिया उन्हनि खे तव्हां सिक्योरिटी प्रोवाइड कयो NGOs खे प्रोवाइड कयो त उहो पंहिंजे जिते चाहिनि था जिते मक़ामी माण्हुनि जी ज़रूरत उते चवनि था जिते मानी जो इंतज़ाम न आहे जिते माण्हुनि खे दवाउनि जी ज़रूरत आहे जेके ॿियूं शयूं खपनि उहो उते ॾियनि मतिलबु बिल्कुल सही गाल है सर आप ज़रा ये बताइए कि कंपैरिजन अगर देखा जाए आप थोड़ी सी हमें फ्लड रिपोर्ट के हवाले से बताएं 2010 और 2022 मैं एक बात कहने जा रहा हूँ और इंतज़ामिया भी और दीगर लोग भी मुझे माफ़ करें लेकिन मेरी आदत है कि बरमला बात कह देता हूँ और जो बात सच है वो आप आवाम तक उसको पहुँचा देता हूँ देखिए ये कोई अचानक फ्लड नहीं आया दिस इज़ यानी ये कोई चीज़ ऑटोमेटिक नहीं आई है ये प्री प्लान्ड आया है पहले से पता था कि फ्लड इस तरह से आएगा आप बड़े हैरान होंगे कि मैं आपसे कोई इस तरह की बातें कर रहा हूँ 2010 के फ्लड के बाद बाकायदा एक फ्लड कमेटी बैठी गवर्नमेंट ने उस फ्लड कमेटी को बनाया उस फ्लड कमेटी ने 2010 के फ्लड के असबाब पे गौर किया बाहर के कंसल्टेशन भी ली उसमें खूब खाया गया पिया गया सोचा गया सोचवाया गया और इसके बाद एक रिपोर्ट बनाई गई और उस रिपोर्ट को गवर्नमेंट को पेश किया गया ये जो पानी है ना ये नेमत है आज इसको हमने ज़हमत बना दिया है ये पानी जो है अगर मैं आपको अगर 2 मिनट आपकी इंडिया की मिसाल दूं वो उसने वहाँ डैम्स बना लिए अगर वो वहाँ पानी रोक लेता है तो आपकी सारी ज़री ज़मीनें जो हैं वो बेकार हो जाती हैं और अगर वो पानी छोड़ देता है तो आपके यहाँ जो है वो फ्लड आ जाता है तो उसने तो अपने यहाँ डैम्स बना के रिजर्वॉयर्स बना के अपने पानी को स्टोर करना शुरू कर दिया मैं और आप क्या कर रहे हैं हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है जब 2010 के सैलाब के बाद 2011 की जो है वो वाइल्ड रेंज के बाद जब वो बैठा कमीशन और फ्लड कमीशन ने बैठ के इस पर गौर व खौज किया मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने सारे काम किए उन्होंने फॉरेन कंसल्टेशन भी उसके लिए हासिल की लेकिन उस पूरी एक्टिविटी के बाद हुआ क्या उस फ्लड रिपोर्ट पे किसने अमल किया उस फ्लड रिपोर्ट में ये मौजूद था कि आपने रिजर्वॉयर्स बनाने
آپ نے پانی کو سٹور کرنا ہے, آپ نے جو ہے جگہ جگہ پہ جو ہے وہ پانی کو جو ہے وہ مینیج کرنا ہے. اس رپورٹ کے اندر یہ موجود تھا کہ آپ نے ڈیمز بنانے ہیں, آپ نے جگہ جگہ پہ جو ہے وہ اس راستے پہ ڈیم بنانے. یہ پلان پورا اس کا انفراسٹرکچر بتایا گیا تھا اس کے اندر. وہاں پہ یہ بتایا گیا تھا کہ کون سے اسپل ویج ہیں, کون سی ایسی جگہیں ہیں جہاں سے پانی گزر سکتا ہے, لیکن آپ نے جو ہے وہ غیر قانونی بلڈنگیں بنائی ہوئی ہیں, آپ نے جو ہے غیر قانونی چیزیں بنائی ہوئی ہیں, گورنمنٹ نے بھی بنائی ہوئی ہے اور پرائیویٹ لوگوں نے بھی بنائی ہوئی ہے. وہاں پر اس رپورٹ کے اندر موجود تھا کہ اس پلیج ویز کو جو ہے وہ کلیئر کیا جائے تاکہ آئندہ بھی خدا نہ خواستہ اس طرح کی صورتحال ہو تو یہاں سے جو ہے پانی کا ریلا جو ہے نکل سکے. لیکن آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. جب آپ اس کو کچھ بھی نہیں کریں گے تو یہی ہوگا جو ہوا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو کرائم ہے, کرائم. یہ جو فلڈ ہوا ہے, یہ اتنے لوگ جو ہمارے جو ہے وہ 2000 سے زائد کیجولٹیز ہوئی ہیں, 5000 سے زائد لوگ جو ہے وہ انجرڈ ہوئے ہیں. یہاں پر جس طریقے سے جو ہے واٹر باؤنڈ ڈیزیز پھیلی ہیں, آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے کوئی ایسی اچانک ہو گیا؟ نہیں, اچانک نہیں ہوا. ہم اللہ کا عذاب بہرحال اس کو کہتے ہیں, ظاہر بات ہے کوئی تکلیف ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نہ کوئی سبق سکھا رہا ہوتا ہے, لیکن یہ تو پلانڈ ہے, یہ تو باقاعدہ کرائم ہے جس کے اس بار ہوا ہے. اپنی بھی غلطیاں ہیں نا, ہم لوگوں کی اپنی بھی غلطیاں ہیں. ہم اگر گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم انسانوں کی اپنی بھی غلطیاں ہیں. ہم دیکھیں جو جگہ جہاں سے پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے, ہم نے وہاں پہ کنسٹرکشنز کر دی, گھر بنا دیے, ہوٹلز بنا دیے. اب پانی کہاں جائے گا؟ پانی نے تو جب آنا ہے تو پھر وہ اپنا راستہ تو خود بنائے گا نا, اور وہ ساری چیزیں بہا لے جائے گا. تو ان کو جو این او سی دیتا ہے تو کیا ہم اس کا گلا نہ پکڑیں؟ اس کا گلا نہ پکڑیں ہم کہ بھائی آپ نے جب یہ این او سی دیا تو کس بہاف پر دیا؟ آپ کو یہ این او سی دینے کے لیے کس نے بولا؟ آپ ایک غریب کی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو آپ کو یہ رائٹ دیا کس نے؟ جی بالکل. میں آپ کو وہ ہنی مون ہوٹل جی کا بتاؤں, 52 کمرے اس کے, جس جگہ پہ تھا اس جگہ پہ وہ ضائع ہوا, پھر دوبارہ بنایا گیا. پہلے بھی ہو چکا ہے. اس بندے کو کتنی دفعہ وارننگز دی گئی تھی کہ آپ نے بالکل اس پہ دریا کے لیول تک آپ نے اس کو بنایا ہوا ہے, آپ نے اتنی جگہ بھی نہیں چھوڑی ہوئی ہے. پہلے بھی اس بندے کے ساتھ یہ حادثہ ہو چکا ہے, اور 52 اس نے رومز بنائے ہوئے تھے اس کے اندر. اللہ جانے کیا اس کے اوپر عذاب تھا. یہ وارننگز ہوتی ہیں سر اللہ کی طرف سے. انسان اگر سمجھے تو سدھر سکتا ہے, اگر نہ سمجھے تو پھر یہ اعمال ہے ہمارے سامنے ہی. لیکن دیکھیں نا, اس میں ذمہ داری تو گورنمنٹ کی بنتی ہے, چاہے وہ صوبائی گورنمنٹ ہو چاہے وہ آپ کی وفاقی گورنمنٹ ہو. جس گورنمنٹ کی جو ذمہ داری ہے, اگر ٹاؤن پلاننگ کسی کی ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے تو اس ٹاؤن پلاننگ ڈپارٹمنٹ کو جو ہے اس کو پکڑا جائے. کیوں نہیں اس دفعہ جب ہوٹل گرا تھا اس کے لوگوں کو کیفر کردار پہ کیوں نہیں پہنچایا گیا؟ جب نہیں پہنچایا تو ریپیٹ ہوا نا. یہ سر لا اینڈ آرڈر, سوری ٹو سے, کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا لا اینڈ آرڈر بہت اچھا ہے, بٹ ویری سوری مجھے کہیں نظر نہیں آتا لا اینڈ آرڈر. دیکھیے اس وقت جو ہے گورنمنٹ کرنے کا کام کیا ہے, یہ حضرت نے بالکل صحیح فرمایا, ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, آپ ہمیں ان لوگوں کی خدمت کرنے دیں. آپ کا کام ہے آپ راستے صاف کرائیں, آپ کا کام ہے کہ آپ ٹریفک کو کنٹرول کریں, آپ کا کام ہے کہ آپ یہ جو لا اینڈ آرڈر کی ایشوز ہیں اس کو آپ ایڈریس کریں. آپ کا کام, یعنی یہ وہ کام ہے. آپ بیٹھ کے اگر اپنے لوگوں کی وہ اسی میں لگے ہوئے ہیں ڈپلومیسی کے اندر, تو معذرت کے ساتھ اس طریقے سے تو کام نہیں سر. ساری چیزیں اپنی جگہ, فلڈڈ افیکٹیز جگہوں کو بھی ہم تھوڑی دیر کے لیے ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. کراچی, سندھ کا بڑا شہر کراچی, کرنگی کاز وے ایک چھوٹی سی مثال ہے. جی 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 بالکل ٹھیک ہے, ہر دفعہ بارشوں میں وہ ڈوبتا ہے, پانی باہر آتا ہے, لوگ مرتے ہیں اس کے اندر, گاڑیاں ڈوب جاتی ہیں, لوگ بہہ جاتے ہیں. وہ کام نہیں ہو رہا تو ہم تو پھر باقی تو بات کریں ہی نہیں نا. وہاں پہ کیا فلائی اوور نہیں بن سکتا, وہاں پہ کیا روڈز دوبارہ نہیں بن سکتے, وہاں کے لوگوں کو کیا فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا سکتا. اصل میں کراچی کی آپ بات کرتی ہیں, میں تو کہتا ہوں 60 to 70% ریونیو دینے والا شہر, 60 to 70% آپ کی گورنمنٹ کو جو ہے وہ ریونیو دینے والا, اور سندھ کو 95% ریونیو دینے والا شہر کا یہ حال ہے. آج اس کی سڑکوں کا آپ حال دیکھیں کیا حال بنا ہوا ہے اس کا. سر ایلیٹ کلاس فیملیز رہتی ہیں, آپ کے گورنر شورنر ایکس وائی زیڈ جتنے بھی ہیں سارے کراچی کے اندر رہتے ہیں. ان کے گھروں کے باہر تھوڑا سا روڈ اچھا ہوگا, باقی اتنے بڑے بڑے کھڈے ہوں گے جس کے اندر مائیں بھی جاتی ہوں گی, جس کے اندر چھوٹے چھوٹے 6 مہینے کے بچے بھی گرتے ہوں گے. کسی کو کوئی احساس ہی نہیں ہے. تو بہرحال یہ جو بات ہے, جو سچ بات تھی میں نے آپ کے آگے کہہ دی.
جہاں تک ریلیف کی ایکٹیویٹیز کی بات ہے، میں آپ سے عرض کروں کہ الخدمت نے جو ہے اس شہر کے اندر اس ریلیف کی ایکٹیویٹی کو بڑا ڈیزائن کیا ہے. اس کو ہم لوگ بالکل سسٹمیٹک لے کے چلتے ہیں. ہم نے جو ہے کوئی 130 کے قریب کیمپس پورے شہر میں لگائے اور ان کو ہم نے تاکید کی ہے کہ آپ نے جو سامان لے کر آنا ہے اس سامان کے اندر کپڑے آپ کے الگ رہنے چاہیے، اس میں اجناس آپ کے الگ رہنے چاہیے، دوائیں آپ کے الگ رہنی چاہیے. کیونکہ اگر آپ ادارہ نور حق پہ تشریف لائیں نا، جہاں پر اپنے جماعت اسلامی کا صدر دفتر ہے اور الخدمت کا مین آفس ہے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس پوری گلی کے اندر ہم نے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ سٹالز بنا دیے ہیں، چھوٹے کے بڑے بڑے سٹالز بنا دیے. چنانچہ جو گاڑی علاقے سے آتی ہے، جو رات کے 11 بجے کے بعد 12 بجے کے بعد وہ آتے ہیں، وہ اپنے اپنے سٹالز کے اوپر وہ چیزیں جو انہوں نے الگ کر کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں اس کو ڈال دیتے ہیں. اچھا، پھر ہماری خواتین ہیں، اگلے دن صبح آتی ہیں، وہ سارٹنگ کرتی ہیں. بچے آتے ہیں، وہ سارٹنگ کرتے ہیں. اب تو یونیورسٹی کے بچے آنے شروع ہو گئے ہیں، IBA کے بچے آئے ہیں، LD کے بچے آئے ہیں، لڑکے اور لڑکیاں دونوں آئے ہیں. آ کے انہوں نے جو ہے کہا کہ جی ہم آپ کو والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نے ایک کال دی ہے کہ 2 گھنٹے کی والنٹیئر کال ہے کہ آپ اپنے دن کے 2 گھنٹے ہمارے ساتھ لگا دیں. تو وہ آتے ہیں، آنے کے بعد جو ہے وہ اس کی سارٹنگ کرتے ہیں. ایک بات یہاں بہت اہم میں کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں اس کو فزیکلی اس کو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو کپڑے آپ دیتے ہیں نا، برائے مہربانی ان کپڑوں کو نہ دیں. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ جو کپڑے ہیں، آپ کے شہر کے کپڑے نارملی گاؤں والے یا اندرون سندھ والے، بلوچستان والے اس طرح کے کپڑے نہیں پہنتے. نمبر 1. ٹھیک ہے. نمبر 2، کپڑے اولڈ کپڑے کی وہ اتنی ویلیو نہیں ہوتی ہے کہ ٹرک کا کرایہ دے کے میں اس کو وہاں پہنچاؤں. سوری، میں سچی بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. لیکن وہ جو کپڑا ہے نا، وہ ہمارے لیے بڑا تکلیف دہ، کیونکہ اگر بارش ہو گئی تو سب ضائع ہو جائے گا. کل کو لوگ کہیں گے جناب آپ نے تو جمع کیا اور آپ نے کیا کیا، ضائع کر دیا. تو میری درخواست یہ ہے، اس سے سب سے زیادہ اہم چیز ہے پیسے. لوگوں کو ان کی جگہ پر جہاں پر کوئی چیز ملتی ہے وہ پہنچانا زیادہ اہم ہے، نہ کہ میں کراچی سے اجناس لوں، دیگر چیزیں لوں، وہ لے جا کے وہاں پہنچاؤں، ٹرک کا کرایہ بھی دوں، ساری چیزیں. بہتر یہ ہے اگر رہی میر پور خاص میں ہے تو میر پور خاص کے برابر سے چیز لے کے دے دی جائے. اگر آپ کے جھڈوں میں ہے تو وہاں سے لے کے چیز دے دی جائے. سکھر میں ہے تو وہاں سے لے کے چیز. تو پیسے ہوں گے تو پیسے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کے اجناس، ان کی چیزیں ان کو وہیں سے لے کے دے دی جائے. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ آپ اگر دینا ہی چاہتے ہیں تو اجناس دیں. آپ چینی، آٹا، دال، تیل، یہ چیزیں دیں. آپ دینا چاہتے ہیں تو ایکسپائرڈ نہیں لیکن دوائیں دیں. اور دوائیں بھی واٹر بورن ڈیزیز کے لحاظ سے آپ ڈاکٹرز سے پوچھیں، ہمارے ڈاکٹرز بھی بتاتے ہیں، آپ وہ والی دوائیں دیں ان کو. آپ جو ہے وہ ترپال دیں، آپ جو ہے وہ پلاسٹک دیں. آپ اس طرح کی چیزیں آپ دیں گے تو یہ ہے کام کی چیزیں. لیکن اگر آپ نے معذرت کے ساتھ ابھی پرانے کپڑے آپ نے دے دیے، لینے کو تو ہم لے لیتے ہیں، کیونکہ منع تو نہیں کر سکتے نا کہ آپ نے جہاں اتنا اجناس دیا اور 2 کپڑے دینا چاہتے ہیں تو میں یہ نہیں کہہ سکتا نہیں جی یہ میں نہیں لوں گا. لینے کو ہم سب لے لیتے ہیں. لیکن جو تکلیف ہو رہی ہے وہ میں بتا رہا ہوں، سب سے پہلے سارٹنگ ٹائم لگتا ہے. ہمارے بچے اور بچیاں اس کو 2 گھنٹے 4 گھنٹے لگا کے اس کی سارٹنگ کرتے ہیں کہ کون سے پرانے ہیں، کون سے بچے کے، کون سی عورتوں کے، کون سے مردوں کے. اس طرح کے کپڑے جو ہے وہاں پہنے نہیں جاتے. تیسرا یہ کہ وہ اس کی کاسٹ اتنی لگ جاتی ہے کہ کپڑے کی اتنی کاسٹ نہیں ہوگی جتنا مجھے ٹرک کا کرایہ لگ جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں اگر آپ دینا چاہتے ہیں وہ اس کو دیکھیں. اچھا، یہ جب ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر اگلا آتا ہے سارٹنگ کے بعد بڑے ٹرک آتے ہیں. روزانہ ہمارے ہاں سے کوئی 12 سے 13 ٹرک جو ہے انہی سامان کو جو مختلف سٹالز کے اوپر رکھا ہوا ہوتا ہے پیک کرتے ہیں. پیک کرنے کے بعد جو ہے ان کو لوڈ کرتے ہیں اور پھر مختلف جگہوں پہ لے کے جاتے ہیں. اچھا، وہ ٹرک جو ہے وہ جا کے ایسے تقسیم نہیں کرتے. دیکھیں، یہ جو آج کل جو چھینا جھپٹی ہو رہی ہے نا، وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا، آپ جاتے ہیں اس چوک میں. دیکھیں، میں لوگوں کا جو اخلاص ہے اس پہ شک نہیں کرتا. لوگوں کا اخلاص ہے کہ میں سامان لے کے جاؤں، میں اپنے ہاتھوں سے بانٹوں، میں اپنے بچوں کو لے کے جاؤں، وہ اپنے ہاتھوں سے بانٹیں. یہ خواہش میں اس کو سلام کرتا ہوں، اس خواہش کا میں احترام کرتا ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تجربے نے یہ بتایا کہ وہاں پر اگر آپ پہلے سے پلان آؤٹ نہیں کریں گے، مطلب پلان کیا کرنا ہوتا ہے. ہمارے وہاں پہ مقامی لوگ موجود ہیں، والنٹیئرز موجود ہیں، جو جماعت اسلامی کارکنان ہیں، اب ماشاءاللہ وہ الخدمت کے والنٹیئرز بنے ہوئے. انہوں نے سب سے پہلے علاقے کا سروے کیا ہوا ہوتا ہے. انہوں نے دیا ہوا ہوتا ہے 4 فیملیاں ادھر بیٹھی ہوئی ہے، 5 فیملیاں یہاں بیٹھی ہوئی ہے، ان کے یہ مسائل ہیں، ان کے اتنے بچے ہیں، ان کو لے کے ان کو ٹوکن دے دیتے ہیں. جب ہمارا ٹرک آتا ہے تو وہ سب کو ایسے بیٹھ کے تصویریں کھنچوا کے بانٹ نہیں رہا ہوتا، بلکہ وہ لے جا کے ان کو جس کے پاس ٹوکن ہوتا ہے اس کو جا کے راشن دے کر آتا ہے. صحیح. یا ان کو جا کے جو ہے دوائی دے کر آتا ہے، یا ان کو جا کے جو ہے ترپال دے کر آتا ہے، یا ان کے لیے جو ہے وہ ٹینٹ لگا کے آتا ہے. تو اس طریقے سے ہمارے یہاں ہڑبونگ نہیں ہوتی.
झगड़ा नहीं होता, फसाद नहीं होता, लोग लूट मार नहीं कर रहे होते, प्लान तरीके से होता है। डिलीवरी चालान बनता है, आप हमारे कैंप पर आएँ, मैं आपको हर ट्रक का डिलीवरी चालान बताऊंगा, और आपको ये भी बताऊंगा कि किसने इसको रिसीव किया, किस इलाके में रिसीव हुआ और वहाँ पे कितने बेनिफिशरीज हैं। इस वक्त जो है वो तकरीबन 5 लाख से ज़ायद बेनिफिशरीज जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अलखिदमत के हो चुके हैं इन अगस्त के महीने के अंदर। तो ये अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि हम इसको जो है बाकायदा तरीके से बहुत ही अच्छे अंदाज में उसको लेके चल रहे होते हैं ताकि ज़रूरतमंदों को उनकी ज़रूरत की चीज़ें जो है पहुँच जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। ऐं सर जेका ॻाल्हि कई त जॾहिं तव्हां कपिड़ा ॾियो था त एहतियात कयो इन शइ जो त लॉन जा जेके प्रिंटेड कपिड़ा जेके हूंदा आहिनि जेके ॾियणु चाहियो था त जीअं घर में असां पाण बि पाईंदा आहियूं त उहे कपिड़ा जेके तव्हांखे ॾियणा आहिनि त तव्हां उहे ॾियो, सफ़ा सीथरो कपिड़ा जेके मतिलबु हूंदा आहिनि ड्रेसिस जेके अॼुकल्ह जे फैशन जे हिसाब सां आहिनि, हो वीचारा इन्हनि तरह जे कपिड़नि जा आदी कोन्हनि के। लॉन जा प्रिंटेड सूट्स तव्हां पाण बाए करे सघो था। अॼुकल्ह तव्हां ऑनलाइन शॉपिंग ॾाढी ईज़ी थी वई आहे, तव्हांखे त मार्केट वञण जी ज़रूरत बि कोन्हे का। हिकिड़ो साइज़ वठी छॾियो, मीडियम साइज़ वठी छॾियो, उहो एतिरो कंफर्टेबल हूंदो जो सभिनीनि खे अची वेंदो, या लार्ज साइज़ वठी छॾियो। त चवण जी ॻाल्हि इहा आहे त लॉन प्रिंटेड जेके शयूं थियनि थियूं, ड्रेसिस थियनि थियूं, उहे वठो। ऐं नंढनि ॿारनि जा बि केतिरा ई कपिड़ा आहिनि, स्पेशली पैंट्स वठो, उन्हनि में ट्राउज़र्स वठो, चड्डीज़ उन्हनि में न ॾियो, छो जो नंढनि ॿारनि जी टंगूं जेके उघाड़ियूं थियनि थियूं, उन्हनि में मच्छर उन्हनि खे जीत चक पाइनि था, त उन्हनि चड्डियुनि जो को फ़ाइदो कोन्हे ॿार खे पराइण जो। अलाए हुननि वटि उते उन वक़्तु चादरूं आहिनि मथां विझण जे लाइ, अलाए न आहिनि, त बहितर इहो आहे त जेकॾहिं ॿारनि जे लाइ के कपिड़ा मोकिलियो था त उन्हनि में ट्राउज़र्स नरम वारा लाज़मी हुजनि। वक़्तु थियो ब्रेक जो, जल्दी वापसि था अचो। सीमारोन जगोड़ा ही जिंदड़ी बुढ़ी वई। सीमारोन जगोड़ा ही जिंदड़ी बुढ़ी वई। ॿीहर भलीकार चवंदासीं तव्हांखे सिंध जी पुकार में। ऐं अॼु न्यूज़ में हिकिड़ी स्लाइड मुंहिंजे अखियुनि जे साम्हूं गुज़री, यकीनन सभिनीनि ई ॾिठी हूंदी। पंजाब जो हिकिड़ो इफेक्टी एरिया है टांग, जंहिंमें शहबाज शरीफ़ साहब प्राइम मिनिस्टर जेके असांजा आहिनि पाकिस्तान जा, उन्हनि अॼु ऐलान कयो आहे त 2 हफ़्तनि जे अंदरि अंदरि असां उते 100 घर ठाराईंदासीं। माशाल्लाह, सुठी ॻाल्हि आहे। पर सर बात ये है कि सिर्फ टांग नहीं है, पूरा पाकिस्तान है, तो पूरे पाकिस्तान को ही देखना है। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज अ नॉर्मल क्या कहते हैं कि हम इंसानों की एक अपील है आपसे कि आप अगर इफेक्टीज़ को घर बनाकर दे रहे हैं तो पूरा पाकिस्तान है, पूरे पाकिस्तान में आप ये काम करें। और सिंध में स्पेशली जिते जिते कच्चा घर आहिनि उते उते पक्का घर हुजणु खपनि हाणे। ऐं इहो ज़रूरु थियणु घुरिजे त हाणे उन्हनि खे उन जे दरिया जे साम्हूं साम्हूं जिते जिते जंहिंजा घर हुया उन्हनि खे थोरो पोइ ते खणी वञिजे ऐं सेफ जाइ ते उन्हनि जा घर ठाहिया वञनि। त सर जीअं त तव्हां ॻाल्हि पिया कयो ब्रेक में त हाणे नीड्स कहिड़ियूं आहिनि, जीअं तव्हां असांजे व्यूअर्स खे अपील कयो त हाणे कहिड़ियुनि शयुनि जी ज़रूरत आहे जो उते पहुचायूं वञनि। हिकिड़ो त जीअं राशन जी हाणे वॾी ज़रूरत आहे। जीअं पहिरीं पचियल मानी उन्हनि खे ॾींदा हुआसीं, हाणे उहे सेटल थियनि पिया त उन्हनि खे राशन जीअं अटो आहे, चांवर आहे, गिहु आहे, खंडु आहे, चांहि जो सामान आहे, ॿारनि लाइ बिस्कुट आहिनि, इहे शयूं उन्हनि खे ॾियनि मतिलबु त वक़्ती तौर ते उहो पंहिंजो कमु हलाइनि। ॿियो इन खां पोइ हाणे मच्छर घणा थी विया आहिनि, मच्छरदानी जी तमामु घणी उन्हनि खे हाणे ज़रूरत आहे, छो त मलेरिया डेंगी वधी वियो आहे ऐं उहे खुले आसमान तले वेठा आहिनि, रोडनि ते वेठा आहिनि, चई पासनि जो पाणी लॻो पिया। अपील कयो त जेके मच्छरदानियूं जेके होलसेल में जेके ठाहिनि पिया उहे बि सस्ती दामनि ॾियनि ऐं जेके मुख़ैर हज़रात आहिनि उहे बि मुख़्तलिफ़ NGO जेके कमु कनि पियूं उन्हनि खे प्रोवाइड कनि।
ॿियो टेंट नथो मिले त उनजे तरपाल ॾियनि, तरपाल जी वरी ज़रूरत आहे। जेके हाणे छत जेकी किरी पई आहे या रुगो काठियुनि ते वेठा आहिनि पंहिंजूं चादरूं ॿेड़े, मतिलबु हाणे सिज तमामु घणी हाणे गर्मी पए पई, जीअं गर्मी पवंदी पाणी बीठो आहे उन में हीटअप थींदा, मतिलबु उनखे तरपाल ॾींदी त घटि में घटि उनखे थोरो सायो मिलंदो उनखे, तरपाल जी वरी ज़रूरत आहे। ऐं ॿियो मच्छरनि जे स्प्रे लाइ असां गवर्नमेंट खां बि अपील कंदासूं त को सर्वे अहिड़ो करे ऐं जिते जिते पाणी घणो बीठो आहे त उते हेलीकॉप्टर जी तरह सप्लाई उनखे कनि ऐं उनखे मच्छरनि खे उन में जान छॾाइनि। बीमारियूं बि आहिनि ऐं वरी परेशानियूं बि आहिनि, उनखे माण्हू राति भर सुम्ही कोन था सघनि छो त उनखे त लाइट न आहे, पखा कोन्हनि, रोड ते बीठा आहिनि, बंधनि ते बीठा आहिनि, त उन्हनि खे वॾी परेशानी इहा बि आहे। त हीउ टेंट थियो, मच्छरदानी थियूं, ॿियो दवाऊं जेके आहिनि उहे डॉक्टर खां मशवरो करे असांजे NGO खां पुछनि अची त कहिड़ी कहिड़ियूं दवायूं, ईअं ॾियण में फ़ाइदो न आहे, जंहिं दवाई जी ज़रूरत आहे उहे दवायूं तव्हां पहुचायो। ख़ासि तौर ते मैदे जी बीमारियूं आहिनि, पाणी जे पीअण जा, डिहाइड्रेशन थिए थी, स्किन जूं बीमारियूं आहिनि, मलेरिया बुखार आहे ऐं बुखार जी पैराडोल वग़ैरह आहे, इहे जेके दवायूं जेके तव्हां अचो NGO में तव्हां पुछो उन हिसाब सां तव्हां ॾियो। ॿियो असां सां जेके ताउन कयो आहे उनजो मां ज़िक्र करणु चाहियां थो त कराची वॾो मतिलबु जीअं साईं ॿुधायो त पूरे मुल्क में सभ खां वॾो रेवेन्यू ॾियण वारो शहरु आहे। सभिनी परेशानियुनि में हींअर कराची वारा माण्हू मौजूदु आहिनि। हींअर 2 साल पूरा कोविड में गुज़रिया आहिनि, असांजे जेके फैक्ट्रियूं माण्हू मुतासिर थियूं आहिनि, कारोबारी माण्हू मुतासिर थिया आहिनि, पर पोइ बि उनजो वॾो दिलि आहे, अलाह पाक उनखे वॾो जज़्बो ॾिनो आहे कराची जे माण्हुनि खे, हू तमामु NGOs खे सपोर्ट कनि पिया। जीअं त हाणे असांखे बि कराची मां जेके आहिनि उहे हिते जे सरमाएदार आहिनि, सनतकार आहिनि, बिज़नेसमैन आहिनि, उहे ॾियनि पिया ऐं आम माण्हू बि ॾिए पियो। आम माण्हू जेको 10 रुपया ॾिए थो असांजे लाइ उनजे लाइ वॾी क़दुरु आहे। जेको पंहिंजो ॿार पंहिंजो गुलक जेको जमा करे 100 रुपया अची ॾिए थो त माण्हू ॾिसे थो उनजो जज़्बो आहे। हाणे घणा माण्हू ईअं आहिनि जो पंहिंजो पाण सामान गॾु करे पंहिंजे ॿारनि खे वठी, इहा सुठी ॻाल्हि आहे, साईं पाण ज़िक्र कयो त मोटिवेट थींदा, उन जज़्बो उनजो वधंदो। घणा माण्हू अचनि था असांखे पुछनि था बाबा किथे ज़रूरत आहे, असां उनखे गाइड कयूं था, अचो तव्हां पंहिंजे हथनि सां विरायो, असांजा माण्हू उते मक़ामी तव्हांखे सपोर्ट कंदा, तव्हांखे हेल्प कंदा, तव्हां पंहिंजे हथनि सां वञी पाण जेको ॾींदा तव्हांखे ख़बर पवंदी, पोइ जज़्बो अञा वधंदो। जे हिकिड़ो माण्हू हिकिड़ो ट्रक तव्हां काए वेंदो ॾिसंदो हुते त माण्हू कीअं रहनि पिया, असां हिते कीअं रहूं पिया कराची में, असांखे सहूलियतूं सभु अलाह पाक ॾिनियूं आहिनि, अलाह जो शुक्र आहे अल्हम्दुलिल्लाह। असांजी बिजली आहे, हर शइ मौजूदु आहे, दवायूं आहिनि, अस्पताल आहिनि, हर शइ आहे। पर उहे माण्हू जेके सड़कनि में वेठा आहिनि, इवन गवर्नमेंट स्कूलनि में जे वेठा आहिनि, तव्हां स्कूलनि जी तव्हां सर्वे कंदव, तव्हांजी टीम जे तरफ़ां तव्हांजे हर नुमाइंदा मौजूदु आहिनि। गवर्नमेंट स्कूलनि जी हालत तव्हां ॾिसो त ईअं लॻनि पिया त जीअं मतिलबु जेल खां बदतर आहिनि। उन में लाइट जी सहूलियतूं न आहिनि, उन में को सफ़ाई जी सहूलियतूं न आहिनि, घणा स्कूल अहिड़ा आहिनि जिते बाथरूम न आहिनि। हाणे फैमिलियूं रहनि पियूं कीअं उते, मतिलबु ॿार उन हाणे कनि पिया, केतिरी अज़ियत में गुज़रनि पिया उहे। त गवर्नमेंट खे खपनि अहिड़ियुनि जाइ जेके स्कूल आहिनि उन में फैसिलिटियूं प्रोवाइड कनि, सफ़ाई कनि, ऐं जेके वॉशरूमनि जा मसइला आहिनि उहे बि वॾा आहिनि मतिलबु। ऐं ॿियो असां जेके असांजा कोऑपरेट कया आहिनि कराची जे माण्हुनि, असां हुनजो शुक्रिया अदा कयूं था, हमेशह कनि था। 2002 जो ज़लज़लो हुजे, 5 जो ज़लज़लो हुजे, 2010 ऐं 11 जो बोर्ड ऐं जेके सलाह मुतासिर हुजनि, कराची जी वॾियूं जेके तंज़ीमूं आहिनि, NGO आहिनि, उन ख़िदमत कयूं, माण्हुनि ख़िदमत कयूं। असांजो अलमुस्तक़बिल सोसाइटी बि उनजे सां गॾु जीअं 2005 में थियो त सभिनी खां पहिरीं असांजो कैंप मुज़फ़राबाद में लॻो। उनजो मसइलो इहो त असांजो अलमुस्तक़बिल मेडिकल कॉम्प्लेक्स मौजूदु आहे उते, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम मौजूदु आहिनि, एम्बुलेंसूं मौजूदु आहिनि। हाणे जॾहिं बि को वाक़ियो कश्मीर में जॾहिं थिए थो, अलमुस्तक़बिल मेडिकल कॉम्प्लेक्स में उते माण्हू ट्रेंड आहिनि, उन्हनि रेस्क्यू जी ट्रेनिंग ॾींदा आहिनि, पूरे साल उहे एक्टिव हूंदा आहिनि। जॾहिं बि को मसइलो थिए थो, एक्सीडेंट थिए थो, असांजी टीम वञे उते पहुचे थी। ईअं सिंध में बि असांजा माण्हू मौजूदु आहिनि, साईं जीअं ॿुधायो, असां पंहिंजे माण्हुनि खे ट्रेन कयो आहे त पहिरीं रेस्क्यू जीअं माण्हुनि जी जान बचे, सभिनी खां पहिरीं त जान बचाइण आहे, उहो रेस्क्यू कयूं आहिनि। हाणे रिलीफ जो कमु हले पियो, ऐं वरी उन खां पोइ वॾो मसइलो जेको ईंदो हाणे रिहेबिलिटेशन जो आहे। उन में वॾो मसइलो इहो थींदो जो हाणे फसलूं तबाह थी वियूं आहिनि, माण्हुनि जा कारोबार कोन्हनि, माण्हू सड़कुनि ते अची विया आहिनि। हाणे उहो वञी पंहिंजे घरनि में कीअं रहंदा, मतिलबु उन्हनि खे रोज़गार न आहे। हाणे ॾिसो तव्हां खजी फसल जेका आहे, अरबनि रुपयनि जो नुक़सानु थी वियो, बारिश पई आहे, को उन में छुहारो कोन ठहियो आहे, ऐं खजी तव्हां जेका कराची में अधु कचल पक मिलंदी, तव्हांखे किथे पूरे कराची में कोन मिली आहे, कोन मिलंदो, डोको जंहिंखे चवंदा डोको चवंदा आहिनि। अरबनि रुपयनि जो उन्हनि में केतिरा माण्हू, हज़ारनि माण्हुनि जा रोज़गार उन में मज़दूर हुया, जेके माण्हू मज़दूरी कंदा उन्हनि जो नुक़सानु थी वियो।
जेके ठेकेदार वठंदा उन्हनि खे नुक़सानु थियो, जेके ज़मींदार हुननि खे नुक़सानु थियो, पोइ इहो इफेक्ट ओवरऑल पूरी क़ौम ते आहे। हाणे जेके फुटी जो हाणे फसल बिल्कुलु तयारु हुई, हाणे पाणी बीठो आहे उते में, चांवरनि जी फसलनि में पाणी बीठो आहे, उहो ख़राबु थी विया, केलनि जे बाग़नि में नुक़सानु थी वियो आहे, टमाटो ख़राबु थी विया आहिनि, सब्जियूं ख़तमु थी वियूं आहिनि। हाणे 100 रुपया वारी शइ हाणे तव्हांखे 200 300 रुपया किलो मिलनि पियूं। जे हाणे अलाह करे को बहितर थिए, ॿाहिरां अचनि पिया मतिलबु ऐं टमाटर इहे ॿियो बसर आहिनि, इन में 200 300 रुपया ग़रीब माण्हू किथां वठंदा मतिलबु। सही ॻाल्हि पोइ इन में असां कराची में हिकिड़ो त साइट एसोसिएशन ऑफ कराची साइट जेका आहे उनजो चीफ पेट्रन ज़ुबैर मोतीवाला साहब ऐं साइट एसोसिएशन जो सदर जनाब अब्दुल रशीद साहब पंहिंजी टीम सां गॾु अलमस्तो आयो। अच्छा, उहो पूरो असांखे राशन जा बि ॾिना ऐं ॿियो असांखे सपोर्ट बि कई, टेंट बि ॾिना ऐं अलख़िदमत जा माण्हू बि उते आया, उन्हनि खे बि सपोर्ट कई। असांजे अलमुस्तवा सेंटर में सभु साइंस वारनि जा नुमाइंदा हुया। ईअं असांखे राइस एक्सपोर्टर जेके आहिनि उहो वॾो सपोर्ट पिया कनि, उहे असांखे चांवर बि ॾियनि पिया, पैसा बि ॾियनि पिया ऐं रिलीफ में कमु असां कनि पिया। असां उनजो शुक्रगुज़ार आहियूं। ऐं ॿिया बि जेके असांजे मलिक ब्रादर हिकु ऑर्गेनाइज़ेशन आहे, उन असांखे 3 टन खजियूं ऐं 2 टन चणा, बिस्कुट ऐं ॿियूं अहिड़ियूं शयूं उन में, जो त हाणे हर टाइम त माण्हू मानी कोन थो पचाए सघे, हर को खुराक बि कोन थो पचाए सघे। इहो असां 15-20 ॾींहं अॻु में मीरपुर ख़ासि वियासीं उन टीम सां गॾु, उन्हनि पंहिंजे हथनि सां विरायो। खजियुनि में इहो आहे जो 4-2-3 खजियूं खाए पाणी पीअंदो माण्हू गुज़ारो थींदो। भुॻल चणा उन में हुया, चणा हाणे ॿार आहिनि, उनखे थोरो ॾींदो, पाणी पीअंदो, गुज़ारो थींदो। ईअं बिस्कुट जो इंतज़ाम असां कयोसीं। मॉस्फिल जेको लोशन आहे इहो उनखे असां ॾिनोसीं। पेनाडोल जो हिकिड़ो पतो असां ने विधो, बुखार आहे त हाणे डॉक्टर जे न आहे, राति जो टाइम आहे, घटि में घटि पेनाडोल खाईंदो बुखार मां रिलीफ मिलंदो उनखे। त इहा असांजी अञा अपील आहे त जेके मुख़ैर हज़रात कराची में आहिनि उहो अचनि। अञा वधि ज़रूरत आहे, पूरे सिंध में ज़रूरत आहे, पंजाब में ज़रूरत आहे, राजनपुर डेरा गाज़ी ख़ान में वॾो उते नुक़सानु थियो आहे, हुते बि माण्हू असांजा रेस्क्यू आहिनि, ॿियूं NGO कमु कनि पियूं। ऐं सिंध में त हाणे वॾो रिहेबिलिटेशन जो वॾो मसइलो आहे, त इन में गवर्नमेंट हाणे को स्टेप वठे। ॿाहिरां जेके NGO अचनि पियूं त माण्हुनि खे हाणे जेके पाणी हाणे घटि थिए पियो, माण्हू पंहिंजे जायुनि में वेंदा, जेके किरियल आहिनि उनखे घर ठाराए ॾियनि, उनजे कारोबार लाइ को लोन ॾियनि, को कर्ज़ो ॾियनि, त उन पंहिंजो कमु हले उनजो। इहो वॾो हाणे अलाह ताला पाक रहम करे उनजे मथां। आमीन। सर, हिकिड़ी ॻाल्हि मां तव्हांखां इहा पुछणु चाहींदमि त जीअं हाणे काफ़ी फैमिलीज़ आहिनि जेके कराची पहुची चुकियूं आहिनि ऐं इलाही मतिलबु हंधनि ते पहुतियूं आहिनि, जीअं हिकिड़ो पंहिंजो सचल ॻोठ थी वियो ऐं मुंहिंजे ख़्याल में स्टील टाउन वारे पासे अची विया आहिनि। सो इहे हाणे मतिलबु छा इते ई सेटल थींदा, इते ई रहंदा, या तव्हांजी जीअं फर्म आहे, तव्हांजो फाउंडेशन आहे, तव्हां उन्हनि खे ॾिसो था, लुक आफ्टर कयो था, या हू वापसि हलिया वेंदा? ॾिसो, हींअर त जेके माण्हू आहिनि असांजे वटि गुलशन अदीद में गवर्नमेंट जो अस्पताल स्कूल आहे, हिकिड़ो वॾो स्कूल आहे, उन में तक़रीबन 550 फैमिलियूं उन रन पियूं। हाणे असां पुठी संडे ते असांजे चेयरमैन हाजी हनीफ़ तईब साहब ऐं असांजी टीम उते वई, उहो सुबुह 3 टाइम सुबुह नाश्तो ॾियनि पिया, उन्हनि खे 2 टाइम मानी ॾियनि पिया, मेडिकल टीम 24 कलाक लॻल आहे, उते असिस्टेंट कमिश्नर बि आयो, मुख़्तियार कार बि आया ऐं असां उनखे कयूं पिया। ईअं गुलशन बीमार बि असांजा आहिनि, मौलाना नसीम सिद्दीकी साहब उनखे ॾिसे पियो असांजो, उनखे मानी हाणे फ़िलहाल त इहो कयूं पिया त मानी ॾियूं पिया उनखे पचाए, छो त उन हाणे इंतज़ाम न आहे उन्हनि जो, दवायूं ॾियनि पियो। इहो त हाणे गवर्नमेंट जी ज़िम्मेदारी आहे त जेके माण्हू आया आहिनि उनखे पंहिंजे वापसि वञनि, पंहिंजे ॻोठनि में वञनि, उनखे फैसिलिटी प्रोवाइड कनि। ऐं असांजी NGO कोशिशि कंदियूं, ऐं असां हींअर प्लेनिंग कयूं पिया त हिनखे रिहेबिलिटेशन करण लाइ, हिन जे घर ठाहिराइण लाइ असां मुख़ैर हज़रात खां मुख़्तलिफ़ जेके ॿाहिरियां जेके NGOs आहिनि उन्हनि खां असां अपीलूं कनि पिया, जीअं असांखे को पैसा मिलंदा कंदासूं, पोइ हिन जे रिहेबिलिटेशन जा कंदासूं इंशाअल्लाह। वैसे मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है कि लोगों को जो है कि कराची उनको जो है वो लाया जाए। देखिए, एक तो अपने इलाके में उनके इलाके की अपनी खुसूसियात हैं, ठीक है ना, अगर वहाँ की इंतज़ामिया उनके लिए वहीं इंतज़ाम कर दे, ठीक है, जो लोग खुराक लेके जाते हैं, खाना लेके जाते हैं, दीगर चीज़ें रिलीफ की लेके जाते हैं, वो उनकी वहीं मदद करें, क्योंकि उन्हें रहना वहीं पर है। कराची शहर के अंदर आने का मतलब ये होता है कि एक नया प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। यहाँ पर लोग इनको मिसयूज़ करते हैं, इनके ज़रिए कब्ज़े कराते हैं, इनके ज़रिए और दीगर मसाइल पैदा होते हैं। तो बेहतर ये है कि इस तरह की फैमिली जितने भी हैं, जो वहाँ की इंतज़ामिया है, जिस गोट से, जिस शहर से, जिस गांव से वो तशरीफ़ ला रहे हैं, वहाँ की इंतज़ामिया उनको वहीं एडजस्ट करे। उनके हमारे स्कूल मौजूद हैं, दीगर चीज़ें मौजूद हैं। मैं ये कहता हूँ कि ये कमर्शियल हाउस किस दिन काम आएगा। मैं ये कहता हूँ ये जो दीगर आपके बड़े बड़े जो आपने बनाए हुए बंगले जो बनाए हैं, ये किस दिन काम आएंगे। आखिर आप इनको क्यों नहीं खोलते?
کہ کھولنے کے لیے اسکول ہی رہ گیا ہے جو بچوں کی تعلیم افیکٹ کرتا ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنے بھی گورنمنٹ کے ادارے ہیں آپ ان کو کھولیں ان کے لیے, اور ان کو کھول کے ان کو وہاں پہ بسائیں. آپ ان کو آل دا وے کراچی شہر لے کر آتے ہیں, بعد میں ان کی جو ہے وہ ان کو لے جانا ایک مسئلہ بن جاتا ہے, بعد میں ان کا ایڈجسٹ ہونا مشکل ہو جاتا ہے. لوگ اس کو مس یوز کرتے ہیں. آپ یقین جانے پچھلی دفعہ جب آئے تھے تو ان کو لے جا کے جو ہے فلاں کئی جگہوں میں بٹھا دیا گیا, زمینوں پہ قبضے کرتے ہیں, اور زمینوں پہ قبضہ, یعنی کہ وہ قبضے نہیں کرتے, ان کو بٹھانے والے قبضہ کرتے ہیں. تو اس طریقے پوری کی مافیا ان کے پیچھے. تو بہتر یہ ہے کہ اب ہمیں اس کو بھی ڈسکریج کرنا چاہیے, اس کو ڈسکریج بہت سارے مسائل جیسے آپ نے بتایا نا کہ اسکولوں کے سندھ کے بھی بڑے شہروں میں جہاں فلیٹ کا اتنا اثر نہیں ہے لیکن لوگ آ کے اسکولوں میں بیٹھ گئے ہیں. اب وہ لوگ وہاں سے بھی ہمیں فون آ رہے ہیں کہ بھئی اب یہ اسکول خالی کرنا ہے, بچوں نے اسکول اب ان کے نقصان ہو رہا ہے, تو اب ان کے لیے کوئی ٹینٹ سٹی کا انتظام کریں. تو ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں اپنے طور پہ, لیکن انتظامیہ کو چاہیے ان کے لیے کہ ان کو ری سیٹل کرنے کے لیے, ان کو واپس لے جانے کے لیے ان کے انتظامات کریں, کیونکہ تو ایجوکیشن اگر بند ہوگی, اسکول بند ہوگی, بچوں کو بہت بڑا نقصان ہوگا. ظاہر ہے سر, بالکل ہوگا. اور اسکولز مجھے خیال میں یہ بند थियण बि न खपनि. हुई सॼो साल 2-3 साल हर्ज थियो आहे ॿारनि जो पढ़ाई खां. कोविड वारो टाइम तव्हांखे यादि आहे, उन खां पोइ वरी जेके बारिशूं ही जेके सिलसिला हुया, केॾियूं मोकलूं थी वियूं आहिनि ॿारनि जूं. वरी जेकॾहिं इनकी फैमिलीज़ जेकॾहिं अचनि थियूं, अखियुनि ते आहिनि असांजी, ॻाल्हि उहा न आहे त असां हिन खां को बेज़ार था थियूं या छा, असांजी अखियुनि ते आहिनि, असांजे दिलनि में उन्हनि जे लाइ जाइ आहे. पर ॻाल्हि इहा आहे त आहिस्ता आहिस्ता हिननि खे पंहिंजनि जाइनि ते रवानो कजे हाणे. छो त जीअं त गवर्नमेंट जो फ़र्ज़ु आहे त हिननि खे घर भी ठहिराए ॾियनि, हिननि खे उन तरह सां फैसिलिटेट भी कनि. सर आप हमें ज़रा ये बताइए कि ओवरसीज़ का कितना कंट्रीब्यूशन है अभी, क्या ओवरसीज़ कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे? देखिए 2010 में भी और उससे पहले 2005 में भी जब ज़लज़ला आया था तो मुझे याद है कि इंटरनेशनली जो है लोगों ने आके बहुत सपोर्ट किया था. टर्की से भी सपोर्ट आई थी, मलेशिया से भी आई थी, इंडोनेशिया से भी आई थी, और सऊदी अरब और यूएई वगैरह से. तो हमने उनको खुशामदीद कहा था. और इस बार भी चूँकि अल-खिदमत फाउंडेशन का पूरा एक बनी हुई है IFRD, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट, तो वो एक ऐसी इदारा है जो तुर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया, आपका श्रीलंका और ये सारे ये एशिया के जो करीब के जो मुल्क है ना, वो उन्होंने मिल के अपनी NGOs के साथ एक सेटअप बनाया था. तो उन्होंने जो है वो हमसे रब्ता करना शुरू कर दिया है. अभी कल ही जो है टर्की से एक वफद यहाँ पर आया हुआ है, और आपको जैसे मैंने पहले बताया कि वो नहीं चाहते कि वो गवर्नमेंट को दें, वो चाहते हैं कि प्राइवेट NGO को दें, ताकि जो है और वो खुद मिल के हमारे साथ करें. कल मुझे याद है, और अभी आपके जाने के बाद हमारी मीटिंग भी है, पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई वाले जो है वो भी इस चीज़ के अंदर चाह रहे हैं क्योंकि मॉडल सिटी यहाँ बनाएं, कुछ घर वो डोनेट करें, वो इस तरह के घर हों कि जल्दी से बन जाएं, यानी कि प्री कास्ट जो आते हैं तरीक़ेकार. कि सही बात है, मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि 2 हफ्ते में वज़ीर आज़म साहब जो है घर कैसे बनवाएंगे, क्योंकि मैं खुद इंजीनियर हूँ और मैं 2 मिनट सोचता रह गया कि 2 हफ्ते में घर बनेगा किस तरह से, अगर वो उस तरह का पक्का कोई घर बनाना चाहते हैं. तो बहरहाल वो रिहेबिलिटेशन अपना वो वाला घर जो है वो हम उसको मैनेज कर रहे हैं. तो हम भी सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी, जनूबी पंजाब में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई मॉडल टाउन बना लें और वहाँ पर 100 घर, 150 घर, 200 घर. सही बात है, एक NGO जो है ना स्टेट का मुकाबला नहीं कर सकती, ये काम स्टेट का है. सही बात. ये जो इससे पहले ख्याल करना, कॉजवेज बनाना और जनाब आपके स्टॉर्म ड्रेन्स को जो है साफ़ करना, ये सारे काम गवर्नमेंट के हैं. NGO उनकी सपोर्ट कर सकती है, हेल्प कर सकती है. लेकिन मसला ये है सिंध में तो मैं देखता हूँ कि सारा काम ही उन्होंने NGO को दे दिया है. हस्पताल NGO को दे दिए, चाहे वो मुस्तफ़ा के हों या अल-खिदमत के हों या किसी और के हों. जनाब आपके जो दीगर जो काम है वो NGOs को दे दिए हैं. यानी कि आप ऐसा करने के दरअसल गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारियों से बिल्कुल फारिग होती चली जा रही है. तो ये करोड़ों का बजट, ये अरबों का बजट कहाँ जाता है फिर? ये अगर इस बजट का आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, और ये बजट जो है वो इसी तरीके, यानी एजुकेशन में बजट इतना होता है कि मैं तो हैरान हूँ कि वहाँ पर एक बच्चे की तालीम पे जो इतने, और आप देखें तो वो सही बता रहे हैं कि टॉयलेट तक नहीं है उसके अंदर, वहाँ बता रहे हैं बिजली तक वहाँ पर नहीं है. तो मैं सोचने पड़ गया कि क्या जुल्म है. मतलब आप अपने किसको कोई जवाब दे तो होना चाहिए ना. ये मेरे ख्याल में हमारी आवाम की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने इलाके के MNA को, हम अपने इलाके के MPA को, हम जो है चीफ मिनिस्टर को हम पूछें, हम उससे बात करें, हम उसके गिरबान पकड़ें
चलें ठीक है, लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन पूछना तो चाहिए। वोट दे, ये मेरा आपका राइट है, मैंने आपको वोट दिया, आप मेरे एमएनए हैं, आप मेरे एमपी हैं, क्यों मेरे इलाके के अंदर? मैं डिफेंस में रहता हूँ, मैंने डिफेंस के एमएनए को पकड़ता हूँ तो हैरान परेशान हो जाता है। अरे भाई, डिफेंस के अंदर तो बजट मौजूद है, यहाँ पे सड़कों के तो खड्डे क्यों पड़े हुए तुम्हारे, यहाँ पर जो है नाले क्यों भरे हुए हैं, यूं यहाँ पानी क्यों ड्रेन नहीं हो जाता, यहाँ क्या मसाइल है? असल इशू ये है कि आप इंजीनियरिंग करते ही नहीं है, आप बस जो डाल देते हैं, पानी निकलता है निकले, नहीं निकलता ना निकले। तो यानी कि आप सोचिए ना कि अगर डिफेंस जैसे पोश इलाके में भी जब ये हालत है तो फिर इस मुल्क का और शहर का आप क्या हाल पूछेंगे मुझसे? तो अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी आपकी बाहर की एनजीओज़ हैं, चाहे वो टर्की से आ रही हों, टिका भी है और सादत पार्टी है और दीगर लोग हैं वो आ रहे हैं, अमल फाउंडेशन जो है वो आपके मलेशिया से आ रही है, इसी तरीके से आपका KPJ जो है वो इंडोनेशिया से आ रही है, पैड जो है वो दुबई से आ रही है, सऊदी अरब से आ रही है, तो यूके से जो है वो UKIM के नाम से यूके इस्लामिक मिशन वहाँ से आ रही है, इकना अमेरिका से आ रही है, तो HHRD हेल्पिंग हैंड्स एंड रिलीफ एंड डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पाकिस्तान में काम कर रही। तो ये सारे लोगों ने हमसे राब्ते किए हैं कि आप हमारे जो है ना फील्ड के पार्टनर बन जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल-खिदमत फाउंडेशन जो है वो इन तमाम NGOs के फील्ड पार्टनर की हैसियत से काम कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह 6 बिलियन रुपए अभी तक हमने जमा किए हैं, और जिसमें से मैंने बताया कि 1 बिलियन 1 अरब रुपया कराची की कंट्रीब्यूशन है और 6 अरब रुपए जो है वो पूरे मुल्क की कंट्रीब्यूशन है। तो मैं तो अपने व्यूअर्स को भी दरख्वास्त करूँगा कि आपने भी जब भी इस चीज़ की खिदमत करनी, हम आपके पैसे हमारे पास अमानत है, आपके पैसे हमारे पास अमानत है, आपकी चीज़ें हमारे पास अमानत है, हम उस अमानत का ख्याल करेंगे, हम पहले भी करते रहे, आइंदा भी करेंगे। आपको कभी भी रब्ता करना है 111-503-504 111-503-504 हमें कॉल करें, हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। alkhidmat.com पे आप चले जाएं, आपको सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी जो आप चाहते हैं। alkhidmat.com वहाँ जाके जो है वो आप डोनेशन भी दे सकते हैं और हमारे बारे में आप पूरी मालूमात भी कर सकते हैं। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है, सही ॻाल्हि आहे। मां त काफ़ी टाइम खां इहो ई सोचींदी आहियां जॾहिं ग्लोबल वार्मिंग जी ॻाल्हि थींदी आहे ऐं क्लाइमेट चेंज जी ॻाल्हि थींदी आहे त असां सुतल छो हूंदा आहियूं हमेशह, ऐं जॾहिं मुसीबत मथे ते अची वेंदी आहे पोइ हिकदमि असां होश में ईंदा आहियूं त हीउ छा थी वियो, ऐं ओसी ताईं असां पाणी जे अंदरि हूंदा आहियूं। सो वक़्तु थियो आहे ब्रेक जो, जल्दी वापसि था अचूं। मारोन जगोड़ा ही जिंदड़ी बुढ़ी भई मारोन जगोड़ा ही जिंदड़ी बुढ़ी भई। ॿीहर भलीकार चवंदासीं तव्हांखे सिंध जी पुकार में, ऐं डेली बेसिस ते असां जेको शो तव्हांजे लाइ खणी था अचूं, असांजा गेस्ट ईंदा आहिनि डिफरेंट NGOs मां, डिफरेंट फाउंडेशन्स मां, हू सभु सिनेरियो असांजे साम्हूं रखंदा आहिनि, कहिड़ियुनि शयुनि जी उन्हनि खे ज़रूरत आहे, छा हू प्रोवाइड करे चुका आहिनि, छा हू कमु करे चुका आहिनि या अञा कनि पिया था, सभु असांखे ॿुधाईंदा आहिनि। ही इन्हनि जो कमु आहे, ही काफ़ी टाइम खां इहो सभु कमु करे रहिया आहिनि। असांजो बि फ़र्ज़ु आहे जेके असां घरनि में वेठा आहियूं या अञा ताईं असां सोचूं पिया था त असांखे ही कमु करिणो आहे, कराइण वारी ज़ात अल्लाह जी हूंदी आहे। तव्हां नेक नियती सां तव्हां पंहिंजे दिलि में हिकिड़ो रखो त मूंखे सुभाणे ही कमु करिणो आहे, तव्हां वटि पैसा हुजनि या न हुजनि, तव्हां सिर्फ़ु हिकिड़ी सोच सुठी रखो, इंशाअल्लाह सुभाणे जॾहिं थींदो त अल्लाह साईं तव्हां खां उहो कमु पाण ई वठंदो। जॾहिं अल्लाह चाहींदो त जंहिं इंसान खां अल्लाह साईं खे कमु वठिणो हूंदो आहे न, चाहे उहो नेकी जो हुजे या कोई बि कमु हुजे, अल्लाह साईं उन खां उहो कमु पाण ई वठंदो आहे, पंहिंजे तरीक़े सां वठंदो आहे। ऐं बाक़ी हाणे असां वेही सोचूं त न असां वटि पैसा कोन्हनि के, असां वटि एतिरी फैसिलिटीज़ कोन्हनि के, असां कंहिंखे अप्रोच नथा करे सघूं, त ईअं नाहे थींदो। हिकिड़ो नंढड़ो ॿारु, मां तव्हांखे पहिरियां बि ॿुधायो हुयो
त हिकिड़ो नंढो ॿारु जंहिंजी डेली जेका कमाई हुई बूट पॉलिश कंदो हुयो, 60 रुपया हुनजी कमाई हुई डेली, बूट पॉलिश कंदो हुयो ऐं गुज़रे पियो हिकिड़े कैंप जे ॿाहिरां खां। त आयो ऐं पुछियईं, हुते माण्हू वेठा हुया, उन्हनि खां पुछियईं त ही छा आहे, छा जा पैसा था वठो पिया? त हुननि ॿुधायो त सॼी दुनिया में जेको मतिलबु आयो आहे सिलसिलो सॼे पाकिस्तान में, सिंध में, हेॾां होॾां, त हुन वीचारे पैसा कढिया ऐं ॾिठईं त मूं वटि इहे ई आहिनि। 30 रुपया पाण रखी, 30 रुपया हुन बॉक्स में विधाईं। त हुन दिलि ॾिसो, हुनजो दिलि ॾिसो। केतिरा ई अहिड़ा ॿार आहिनि जेके पाण अचनि था, उन्हनि खे कोई सेखारण वारो कोन्हे, कोई उन्हनि खे ॿुधाइण वारो कोन्हे, हुननि जी पंहिंजी दिलि आहे, पंहिंजी दिलि सां अची हो 10 रुपया विझनि, 20 रुपया विझनि या 30 रुपया विझनि, उहो हुननि जी दिलि आहे। ऐं सोचो त अलाह साईं केॾो ख़ुशि थियो हूंदो उन्हनि जी इन ज़रड़ी नेकी ॾिसी करे। छा असां पंहिंजे खीसे मां 100 रुपयो बि नथा कढी सघूं? अगरि कोई डेली वेजिस ते कमाए थो 1000 रुपयो, त छा हू 100 रुपयो नथो कढी सघे? कढी सघे थो, बिल्कुलु कढी सघे थो, पर दिलि साफ़ु हुजणु खपे, नियत हुजे। ॻाल्हि आहे नियत जी। और सर इहा नियत अॼुकल्ह माण्हुनि मां थोरी घटि नज़र ईंदी आहे। तव्हांखे नथो लॻे त पहिरियां कुझु अरसो, कुझु साल पहिरियां माण्हुनि जे अंदरि हिकिड़ो इख़लाक़ हूंदो हुयो, हिकिड़ी तमीज़ हूंदी हुई ऐं ॾाढो मतिलबु सुठे वे में हिक ॿिए खे सपोर्ट कंदा हुया। हाणे इहा शइ थोरी घटि थी आहे। इहो तव्हांजी ॻाल्हि ठीकु आहे, पर पोइ बि मां माण्हुनि खे सलाम कंदुसि जेके इन जज़्बे ते पूरे पाकिस्तान में निकितल आहिनि। जेके हालात तव्हांजे साम्हूं आहिनि, कारोबारू माण्हुनि जा हालत तव्हांजे साम्हूं आहिनि, आम तबिको जेको मीडियम तबिको उहो परेशान आहे, वॾा पैसे वारा परेशान आहिनि, कारोबार न आहिनि, बिजली जा बिल वधी विया आहिनि, फैक्ट्रियूं कोन थियूं हलनि। इन जे करे बावजूदि पोइ बि माण्हुनि जो वॾो जज़्बो आहे जो पंहिंजे जेको पंहिंजी हैसियत मुताबिक़, उहो तव्हांजी ॻाल्हि सही आहे। त पोइ असां बि ॾिसूं पिया, NGO हलायूं पिया न, जेको 2005 में 2010-11 में जेको जज़्बो हुयो, जेके माण्हू निकिता, उन जे हिसाब सां हाणे मुंहिंजे ख़्याल में 50% बि कोन निकिता आहिनि। उन जी वजूहात आहिनि इहे जेको मां तव्हांखे ॿुधायां, परेशानियूं आहिनि। ऐं वरी तव्हांजे प्रोग्राम खां जो मार्फत खां अपील कंदासीं, जेके साहिब सरवत माण्हू आहिनि, ग़रीब त पंहिंजे 100 रुपया बि ॾियण लाइ तयारु आहे। जीअं तव्हांजो 60 रुपया हिकिड़ो माण्हू ॿार जेको बूट पॉलिश करण आहे, 30 रुपया जो जज़्बो आहे। जेके साहिब सरवत माण्हू वेठा आहिनि, उहे पंहिंजा कोशिशि कनि, अॻिते अचनि, जंहिं बि NGO खे उन ते एतमाद हुजे हू अचनि, माण्हुनि जी ख़िदमत कनि, माण्हुनि खे वधाइनि। अलाह पाक उनजी रोज़ी में बरकत ॾींदो। हींअर जेके परेशानी में माण्हू आहिनि उहो तव्हांजे साम्हूं आहिनि, मीडिया ते तमामु घटि शयूं अचनि पियूं। प्रैक्टिकली तव्हां वेंदव, तव्हां ॾिसंदव पंहिंजे साम्हूं उन्हनि खे माण्हुनि खे, त जीअं उहे ज़िंदगी गुज़ारनि पिया, कीअं उन्हनि जो टाइम गुज़रे पियो। सॼो ॾींहुं उस ते वेठा आहिनि, बारिश जो पाणी चई पासे लॻो पियो आहे, मच्छरनि में वेठा आहिनि, मानी केॾी महिल मिले थी कान थी मिले, दवायूं किथे मिलनि। NGO पंहिंजो कमु कनि पिया, पर मां सम्झां थो NGO बि जेके बि NGO आहिनि उहे तमामु जाइनि ते कोन पहुची सघनि। अञा केतिरा रस्ता एतिरा आहिनि जेके पाणी में रोड ॿुॾी विया आहिनि, माण्हू कोन पहुची सघनि। पोइ अञा बि माण्हुनि खे अपील आहे त वधनि, अॻिते अचनि, डोनेशन ॾियनि, NGO सां ताउन कनि ऐं पाण अची फील्ड में अची ॾिसनि त जीअं माण्हू खे जेके शयुनि जी ज़रूरतूं आहिनि उन्हनि में क़दम वधाइनि ऐं पंहिंजे मुस्लमान भाउरनि जी मदद कनि। इहो टाइम आहे, ॾुखियो टाइम आहे, ऐं अलाह पाक खे बि इहो वॾो पसंदि आहे। असांजी निमाज़, रोज़ा, हज, इहा ख़बर न आहे त क़बूल आहे या न आहे, पर जंहिं हिकिड़े मज़लूम माण्हू जी, मजबूर माण्हू जी, जेको परेशान हाल आहे, मां सम्झंदुसि, मुंहिंजो यकीन आहे, मुंहिंजो ईमान आहे, जीअं तव्हां कंहिं मदद कई आहे, उहा अलाह जी पाक जी बारगाह में उहा नेकी तव्हांजी मक़बूल आहे। ऐं उहो ई असांजी इंशाअल्लाह उमेदु आहे त असांजे रोज़े महशर असांजे ज़रिया निजात हूंदो। ऐं असांखे नबी पाक जी मिसालूं मौजूदु आहिनि हदीस में। हिकिड़ी तव्हांखे ॿुधायां त हिकिड़ो हदीस में आहे त हिकिड़ो कुतो जेको आहे मरण ते हुयो, हिकिड़ी साहबिया वञे पई, उन पंहिंजे उन कपिड़ो पंहिंजो पाणी में विझी, बर्तन कोन हुयो, उहो पाणी में पुसाए उनजे मुंहं में कई, उन पाणी वियो त कुतो उथी हलियो वियो, मरण ते हुयो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनजे लाइ बिशारत ॾिनी त ये जिस औरत ने ये काम किया है उस पर जन्नत वाजिब हो गई। सुभान अल्लाह।
تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی خدمت، ان کی جو پریشانی دور کرے گا، ان کی بیماری میں تکلیف میں جو اس کی انسانیت کی ہمدردی میں کرے گا. اینے میں ॾिसो हाणे तव्हां मुस्लमान जो चकर न आहे, मुस्लमान असां मुस्लमान ॿाहिरि आहियूं, ॿिए जी मदद कयूं पिया. हाणे जेके बि असां फील्ड में वञनि पिया उते गैर मुस्लिम वेठा आहिनि. सही ॻाल्हि आहे. थर में वञो, मीरपुर ख़ासि वञो, ॿिए पासे में सभु लो कास्ट जेके माण्हू आहिनि, ग़रीब माण्हू आहिनि, सफ़ा कोली भील जेके आहिनि, मतिलबु असां उन्हनि जी जेको बि अचनि पिया उनखे ख़िदमत कयूं पिया. उनमें तफ़रीक़ न आहे त मुस्लमान न आहे तूं, त इंसानियत जे हिसाब सां असांखे सभिनी जी ख़िदमत करणी आहे. उहे लाजवाब बाना आहिनि, उहे बिल्कुलु इंसान आहिनि. बिल्कुलु आहिनि, बिल्कुलु असां त इंसान त बरे आहे, पर जानवर जे मुताबिक़ मां तव्हांखे ॿुधायो, जानवर बि उनखे तव्हां कंदो, इंशाअल्लाह अल्लाह जी बारगाह में उहो मक़बूल थींदो, उनजी मदद कंदो, अल्लाह पाक ख़ुशि थींदो. इंशाअल्लाह इहा बि असांजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. कोई अगरि जानवर आहे, अच्छा मज़े जी ॻाल्हि इहा त हिते पाकिस्तान में शायदि उहे कुझु माण्हू हुजनि जिन जे दिलि में ख़ौफ़ ख़ुदा हुजे, जो जानवर खे ॾिसी करे गाॾी बि रोकींदा हुजनि, या कोई जानवर बिल्कुलु रोड ते ॾिठनि ज़ख़्मी आहे उनखे खणी करे हॉस्पिटल पहुचाइनि, या कंहिं ॿी जाइ ते रखी छॾींदा कनि, या त घणो करे त उॾाए पंहिंजी गाॾी सां हलिया वेंदा आहिनि. हुननि जी ज़ात ते को फ़र्क़ु बि कोन पवंदो आहे, पर इन जो बि हिसाबु ॾियणो आहे. पर तव्हां ॿाहिरनि मुल्कनि में ॾिसो त उते अगरि रोड ते हिकिड़ी हिरणी बि अची थी वञे न, हू ब्रेक था हणनि. पेंगुइन्स जी हिकिड़ी पूरी फैमिली वञे थी, नंढा 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 पेंगुइन्स हुनजा बचड़ा पोयां हुनजे घुमनि था, गाॾियुनि जी वॾी लाइन हाईवे ते थी वञे पई, बीह थी रहे, कलाकनि जा कलाक गाॾियूं बीह थी रहनि पियूं. त जेसीं ताईं ही वञनि, पंहिंजो खेॾनि, मस्ती मज़ाक कनि, पोइ भले जेके जेतिरी देरि थींदी रहे, पर ही वेचारा पंहिंजी मंज़िल ताईं पहुचनि, उनखां पोइ ट्रैफ़िक हलंदो. ये मिसालूं आहिनि असांजे साम्हूं. असां छो कोन इन्हनि मिसालुनि खां कोई सबक़ हासिल कंदा आहियूं? इस हवाले से मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि इंसानों की तो खिदमत करती है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जानवरों की भी खिदमत के लिए हमने वेटनरी हॉस्पिटल्स बनाए हुए हैं, सही, वेटनरी क्लिनिक्स बनाए हुए हैं. देखिए सिंध के अंदर जो है ना, ये जो जानवर है ना, लाइवहुड जो है ना, ये बहुत अहम चीज़ है. मेरे लिए शायद एक बकरी या बकरा या गाय शायद इतनी अहमियत का हामिल ना हो शहर के अंदर, लेकिन सिंध के अंदर उनकी कुल जायदाद वही है. बिल्कुल है, टोटल जायदाद उनकी वही है. ठीक है ना. तो बेसिकली ये इसके लिए ना वो बहुत एहतियात करते हैं. कोई 7.5 लाख आपका ये जो जानवर है, जो आपका गाय है, बकरी है, ये जो है वो ज़ाया हुआ है, सैलाब के अंदर मरा है. तो हमने जो है कोशिश की है कि उनके चारे के लिए इंतज़ाम करें, उनकी इलाज के लिए इंतज़ाम करें. तो जहाँ तक बात इंसानों की है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल-खिदमत उस पर भी काम कर रही है. जहाँ तक बात इन जानवरों की है, वेटनरी हॉस्पिटल और चारे के हवाले से उनके लिए काम कर रहे हैं. लेकिन बस मेरी एक दरख्वास्त है मेरी तमाम व्यूअर्स से, तमाम आपके चैनल के तवस्सुस से, कि देखिए मेरे और आपके होते हुए कोई भूखा ना सोए. सही बात. मेरे और आपके होते हुए कोई भूखा ना सोए. ये मैं अपनी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम खुद भी इसको देखें, और अगर हम खुद नहीं पहुंच सकते तो हम ऐसे इदारों के ज़रिए पहुंचने की कोशिश करें ताकि लोगों की भूख हम मिटा दें. जज़ाकुमुल्लाह खैर. बेशक बेशक. थैंक यू सो मच सर, आप आए और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया. बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने हमारे साथ शेयर की. तव्हांजो बि थैंक यू सर. ऐं कोई मैसेज ॾियणु चाहींदव? बसि इहो ई आहे, जीअं असां अपील कयूं आहे, साईं बि चयो आहे त क़दम वधाइनि, जेके अञा इन कम में डोनेशन में पुठियां आहिनि उहे अॻिते अचनि, NGO सां राब्तो कनि. जिथे जिथे ज़रूरत आहे उते माण्हुनि खे खाधे जी ज़रूरत आहे, दवाउनि जी ज़रूरत आहे. ऐं जीअं जानवर जी ॻाल्हि थी त असांखे उतां डिमांड आई, जेके जानवर आहिनि हुन लाइ असां मच्छरदानियूं ठाराए मोकिलियूं. माशाअल्लाह. जीअं साईं ॿुधायो त उते ग़रीब माण्हुनि जो रुगो जानवर जेके सॼे साल पालंदा आहिनि उहो उन्हनि जो कुल मिल्कियत आहे. जेकॾहिं मैं जे वटि आहे उनजो खीरु ढोए उहो उनजो कनि पिया, उहो मरी वई, तुंहिंजो रोज़गार बंदि थी वियो. बकरियूं आहिनि, बकरियूं आहिनि, ॿिया जानवर क़ुर्बानी जा जानवर रखंदा आहिनि माण्हू. पोइ असां उनजे ख़ासि तौरु मच्छरदानियूं अहिड़ियूं वॾियूं ठारायूं आहिनि ते जानवरनि जे मथां बचनि ऐं उहे बीमारियुनि खां बचनि, मच्छरनि खां बचनि. माशाल्लाह माशाल्लाह. सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो मैंने दिया है, बहुत सारे दे दिए कि जनाब मेरे और आपकी वजह से हमारे होते हुए कोई भूखा ना सोए. बेशक बेशक. कोई भूखा ना सोए, कोई बीमार ना रहे, कोई तकलीफ में ना रहे. और इसके लिए अल-खिदमत हाजिर है. मैंने आपको पहले भी इसके लिए बताया कि हमारा नंबर है 111-503-504, 111-503-504, alkhidmat.com. आप राब्ता करें, हम आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं. इंशाल्लाह इंशाल्लाह.
ऐं जेको आहे इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो सुभाणे तव्हां सां मुलाक़ात कंदासीं। थैंक यू सो मच शोभी भाई। और अभी जाते जाते हम आपसे कुछ सुनेंगे, दुआ वगैरह जो भी आप सुनाना चाहें हमें। बिल्कुल, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान में हमद सना एक शेर आपके सामने। जी व्यूअर्स, इंशाल्लाह सुभाणे मुलाक़ात कंदासीं। तेसी ताईं पंहिंजो पंहिंजे प्यारनि जो तमामु घणो ख़्यालु रखिजो। मूंखे मुंहिंजी पूरी टीम खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। जी शुरू। बंदा तो गुनहगार है, रहमान है मौला। बंदा तो गुनहगार है, रहमान है मौला। बंदे पे करम करना तेरी शान है मौला। बंदा तो गुनहगार है, रहमान है मौला। मायूस क्यों होता है तू, मायूस है क्यों रहमते बारी से बता दे। अल्लाह के दरबार में सर अपना झुका दे, फिर देख तेरा कितना निगहबान है मौला। बंदा तो गुनहगार रहमान है मौला। बंदे पे करम करना तेरी शान है मौला। बंदा तो गुनहगार है, रहमान है मौला। अल्लाह